So, and I just set Nitish up as co-host as well. Okay, cool. Okay, so welcome everyone. सभी का आज स्वागत. आज हम डिजिटल मिक्सर्स के बारे में कुछ देखेंगे, कुछ जानकारी पाएंगे इसके ये सब्जेक्ट के बारे में. सबसे पहले सबका इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ. हमारे साथ है जेसन टैन जो कि मैकी के प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट है 2014 से, और जेसन म्यूज़िक इंडस्ट्री में 1990 से है. वो बहुत से अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, लोकल और मतलब सिंगापुर में और बाकी सब जगह पे भी, और अलग अलग एल्बम रिकॉर्डिंग्स पे काम करते हैं, स्कोर फिल्म के लिए, टीवी कमर्शियल्स के लिए, नेशनल इवेंट्स के लिए, और म्यूज़िक बनाने के साथ साथ ऑडियो इंजीनियरिंग में उन्होंने वेंचर किया 1990 के आसपास, जिसके दौरान उन्होंने अलग अलग मिक्सर के एल्बम के लिए मिक्स किए हैं, शोज़ के लिए और अलग अलग जगहों के लिए सिस्टम डिज़ाइन किया है. जस्ट टू रिपीट दैट इन इंग्लिश, वी हैव विद अस जेसन टैन. ही इज़ अ मैकी प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट सिंस 2014. He's been in music industry since early 1990s. Jason has also been involved with numerous projects through all the years for local in Singapore as well as overseas as a music producer, composer, or arranger. His works include album recordings, independent and major record labels, scoring for film, TV commercials, and major national events, sound designing, to name a few. The progression from making music to audio engineering came as a natural shift during the later part of the 90s, which led him to mixing studio albums and live shows and designing systems for various venues. Jason, please say hi to everyone. Hey, hi, everyone. Thanks for the great introduction, Karen. I don't deserve that. We also have another badass with us. His name is Luis Wasserman. He's a drug lord from Colombia who's actually moved into United States and now selling Mackie. I'm just joking. He's not a drug lord, but he is from Colombia. And for those of you who've been watching Narcos and all those, all the things about drug-related things on Netflix, he's from Medellin in Colombia. And sure. Just to say that in Hindi, हमारे साथ Mackie के सेल्स मैनेजर है जो एशिया पैसिफिक के लिए है, और ये पूरे सेल्स के बारे में डिटेल्स हमें प्रोवाइड करेंगे. Louis, say hi. Hi, how are you? All good. And we also have our favorite Nitish Narayan with us, who is, as you all know, a well-known mix engineer and is also heading the tech support for Stage Mix Technologies. हमारे साथ नितेश भी है जो बहुत से अलग अलग बैंड्स के लिए मिक्स इंजीनियर भी है और स्टेज मिक्स के लिए टेक सपोर्ट भी देखते हैं. नितेश, you can say hi to everyone. Hi everyone, good to be here. So let's quickly begin. Jason, you want to begin the session? Let's talk about something, and 30 minutes for the next maybe 30 minutes we'll just do some presentation and then do a live session for the next after that for about 1.5 hours. तो अगले आधे घंटे के लिए हम थोड़ा खाली इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद 1-1.5 घंटे में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे आपको डिजिटल आईपैड के इंटरफेस पे. सो या लेट्स बिगिन. जेसन, ऑल गुड टू गो? Cool, great, thanks. Okay, first, before I start, I would like to welcome everyone to this webinar. All right, and thank you again, Karen, for setting this up, and welcome. Okay, so I'm going to spend some time talking about the Master Fader app today and how it changed the way we all mix today. All right. Jason, so, I'll kind of just be repeating so before you start the next slide, I'll just repeat the same thing in Hindi so it's easier because most of the people would understand Hindi a lot easily. So you can move on to the next slide. I can just go on the go and translate. It's all right. I'm back to where I started, so it's okay. So थोड़ा सा brief introduction देने के लिए आज हम मास्टर फीडर जो मैकी का ऐप है, जो कि आपके टैबलेट पे या आपके कंप्यूटर पे या आपके फ़ोन पे, ये मास्टर फीडर ऐप के बारे में थोड़ा जानेंगे और ये इतने सालों में कैसे बदला है और आज के टाइम में हम कैसे मिक्स करते हैं, इसके बारे की इसकी जानकारी आज हम पाएंगे इसको.
And to you, Jason. Okay, let's move on then. Now, so it all began in 2012, right? The DL 1608 was launched at NAMM in 2012, and along with that, the Master Fader app. So that year itself was a big year for us because it was a birth of a new product, right? Something entirely different from anything out there. तो इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में अमेरिका के नैम शो में, जहां ये पहली बार लॉन्च किया गया था. कोई भी दूसरी कंपनी नहीं थी जिन्होंने डिजिटल मिक्सर का इंटरफेस वो टाइम पे लॉन्च किया था. ये सबसे पहली कंपनी थी जिन्होंने डिजिटल मिक्सर के बारे में उन्होंने आईपैड पे मिक्स करना सही समझा और इसको लॉन्च किया. So what we thought of is like every time when people mix with a hardware mixer, you're confined to a spot, right? With Apple coming up with the iPad and the iPad being used as a mobile device, we thought of combining the two items together and marry them and making them into something new. An iPad controlled digital mixer. So the DL 1608 was born with that thought behind. Allowing engineers to not be tied in anymore to a single spot in mixing or confined to a single spot with doing his work, allowing the mixer to be placed at the closest point to the stage, shortening cables, making sound quality better, keeping it as short as possible, keeping impedance down so we don't lose highs and stuff like that, and obviously saving costs, right? So इसकी शुरुआत ये आइडिया से हुई थी कि जो आप डिजिटल मिक्सर यूज़ करते हैं, जो मिक्स इंजीनियर है जो भी डिजिटल मिक्सर यूज़ कर रहा है वो एक ही जगह पे अटका हुआ है. तो और वही टाइम पे एप्पल ने आईपैड लॉन्च किया था. तो उन्होंने पहले प्रोडक्ट जो उन्होंने सोचा कि ये DL 1608 में ये दोनों फीचर्स को कंबाइन करें. अगर हम एप्पल के टैबलेट जो है जो एप्पल ने लॉन्च किया और इतना पावरफुल टैबलेट था, उसके साथ लोग सब जगह घूम सकते हैं. तो मिक्स इंजीनियर को एक ही जगह पे अटके रहना ज़रूरी क्यों है? वो आईपैड को लेके स्टेज के पास में जा सकता है और या कुछ भी उनका जो एक्चुअल मिक्सर है वो स्टेज पे रख के कहीं भी घूम सकता है. तो एक्चुअल जो केबल का लेंथ है काफ़ी हद तक कम कर सकती है. लंबे केबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. साउंड क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव होगी क्योंकि ये लो पास फिल्टर जो लंबे केबल हम यूज़ करते हैं उसमें एक तरीके का इम्पीडेंस होता है जिसमें एक लो पास फिल्टर की तरह आपका HF थोड़ा कट होता है. तो केबल कम होने की वजह से एटलीस्ट आपका वो जो HF का रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा है. और इंजीनियर कहीं भी घूम सकता है और आपका जैसे स्नेक का केबल का कॉस्ट भी अपना आप पूरी तरीके से बचा रहे हैं. I mean, a lot of people have asked, what is a digital mixer? Most of the time I ask people, do you know what's a digital mixer? A digital mixer is more or less like a computer, right? With a sound card within, and instead of doing your daily web browsing work and your word processing, all it does is it does mixing and does music and it processes audio. So in most digital mixer, you will find a GPU within the mixer, right? And the CPU for doing the audio part of things and a GPU for doing the video part of things. And most of the time, GPU, when you tie it in with a computer, with a mixer, it takes in a lot of processing power. It generates a lot of heat as well. With the DL 1608, we basically separated the two. So the iPad now takes care of all the video processing. We do not need to use our processor to do that video processing part. And the heat is separated because the heat is on the iPad now and not on the mixer, making it very reliable. At the same time,
with the launch of the iPad, the DL1608, we were able to support up to 10 wireless device. It's almost impossible to have 10 screen on a mixer back then. So अगर बहुत लोग पूछते हैं कि डिजिटल मिक्सर क्या है, डिजिटल मिक्सर बेसिकली एक कंप्यूटर है जो कि आपके ऑडियो के सिग्नल्स को हैंडल कर रहा है. जैसे आपका कंप्यूटर अलग अलग कैलकुलेशन करता है, अलग अलग प्रोसेसेस करता है, वैसे एक डिजिटल मिक्सर एक कंप्यूटर है जो पूरे ऑडियो प्रोसेसेस को संभालता है. कोई भी आप ऐसा कोई भी एक डिजिटल इंटरफेस को देखेंगे तो उसमें एक सीपीयू रहता है आपके ऑडियो प्रोसेस को संभालने के लिए, और दूसरा एक जीपीयू रहता है जो आपके वीडियो के पूरे इंटरफेस को और प्रोटोकॉल को संभालता है. इसके दौरान जो जीपीयू है उसमें उसकी वजह से काफ़ी गर्मी पैदा होती है. इसको देखते हुए अभी हम जब आईपैड के मिक्सर को यूज़ करते हैं उसमें आपका जो विजुअल है, जो आपका विजुअल इंटरफेस वो आईपैड के ऊपर है, वो अलग है, और आपका जो ऑडियो इंटरफेस और सीपीयू है वो मिक्सर के अंदर है, वो जो आपका रैक माउंट मिक्सर है. तो इसमें आपका जो हीट और गर्मी होने की जो शिकायत होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, और उसमें आपका जो रिलायबिलिटी फैक्टर है काफ़ी बढ़ जाता है. तो इसमें ये एक एडवांटेज है. और दूसरा है कि जब उन्होंने DL1608 लॉन्च किया उसमें आप 10 स्क्रीन एक साथ यूज़ कर सकते थे, तो उसकी वजह से आप 10 अलग अलग डिवाइस से आप मिक्सर को कंट्रोल कर सकते थे, जो कि एक डिजिटल मिक्सर में आप कभी भी आपने देखा है कि कभी भी 10 स्क्रीन नहीं मिलते आपको. Jason? Okay, so the other thing that we wanted to do was a GUI that was very simple, very easy to use, very easy to navigate, and that was the psyche of the master fader and DL. तो दूसरा उन्होंने उनका जो दूसरा गोल था कि उनका यूज़र इंटरफेस जो है काफ़ी फ्रेंडली बनाए कि कोई भी उसको देख के उसको ऐसा ना लगे कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, कोई वापर नहीं सकता है. वो खोल के कोई भी बिगनर या कोई उसको डायरेक्ट उन्होंने ऐसा बनाया कि कोई भी बिगनर भी उनके डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स लगा के ठीक ठाक मिक्सिंग कर सकता है. Okay, so the next following year, 2013, right, the DL806 was added to the list of hardware, and Master Fader 2 was released at that year too. So it's a slimmer version. Along with that, we released My Fader, which was a slimmer version of the Master Fader for the iPhone. तो उसके बाद 2013 में उन्होंने DL806 लॉन्च किया जो कि 8 इनपुट और 6 आउटपुट का मिक्सर था, और उसके साथ उन्होंने माई फीडर लॉन्च किया जो कि आपके स्मार्टफोन के लिए जो ऐप था, आप अपने आईफोन के ऊपर अगर कोई भी ऐप डाउनलोड करते थे उसके लिए कंट्रोल करने के लिए उसका ऐप का नाम माई फीडर था. तो वो 2013 में लॉन्च हुआ था. On top of that addition, we added pre-DSP aux source, we added new vintage style dynamic processor, vintage style EQ, and support multi-language. उसके साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग लैंग्वेज में इसको लॉन्च किया. विंटेज के मतलब एकदम पुराने टाइप में जो मिक्सर का जो इंडिकेटर्स थे और लेवल कंट्रोलर्स थे और नॉब्स थे, उन्होंने वो उसका सेम लुक मास्टर फेडर और माई फेडर में उसको इनकॉर्पोरेट किया. तो आपको ऐसा लग जिनको बहुत पुराने मिक्सर पे काम करने की आदत है उसका पूरा इंटरफेस को पुराने लुक देख के वो पुराने मीटर और रोटरी कंट्रोल दे सकते हैं. Unlike hardware devices, which got a fixed chassis and controls on the chassis itself, a lot of your parameters are all silk screen onto the device, onto the chassis. You can't put multi-language on it. You can't put too much prints on it because it's going to be too cluttered. With a GUI on an app, you can do anything to it. Add a volume knob, add a fader, add an extra button, add a whole extra language on top of that. So there's a lot of advantage on that point,
And on that year itself, a lot of other brands or other makers of digital mixer took notice of what happened with the DL1608 and 806 on Master Fader, and they started adopting using iPads and iPhones to run the mixer. जब भी आप डिजिटल मिक्सर यूज करते हैं उसमें काफ़ी पैरामीटर्स फिक्स्ड होते हैं, मतलब आपका स्क्रीन स्पेस में आप जो फेडर या कुछ है उनका जो स्पेस है लगभग सेम ही रहता है, जो लैंग्वेजेस है लगभग सेम ही रहते हैं। जब आप ऐप के ऊपर काम करते हैं उन आपके ऊपर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपको एक एक्स्ट्रा फेडर ऐड करना है, एक एक्स्ट्रा बटन ऐड करना है या एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज ही ऐड करना है। तो ये सारे बातों में आपको फ्लेक्सिबिलिटी जब आप ऐप के ऊपर काम करते हैं बहुत आपको ये एडवांटेज दिखेगा। और यही देख के अलग अलग मैन्युफैक्चरर ने मैकी को का सक्सेस देख के 2013 में दूसरे मैन्युफैक्चरर ने ये प्लेटफॉर्म आईपैड के ऊपर मिक्स करने का प्लेटफॉर्म इनकॉर्पोरेट किया अपने ब्रांड्स में। और काफ़ी कुछ ब्रांड्स हैं जिन्होंने मैकी से भी ये पूरा खरीद के ये टेक्नोलॉजी को अपना नाम देके आगे उनके नाम से बेचा है। During that time, a lot of users came back to us and said, hey, we like what you've done. We've tried the other brands, and most brands, their apps seem to be very bloated and slow. There is a reason behind it, because most of the other brands, the thought of the app is an afterthought, if you know what I mean. So they design the hardware and then they design the software, and they didn't design it together. बहुत से ब्रांड यूज़र जो है जो जिन्होंने भी मास्टर फीडर या कुछ यूज़ किया है वो बहुत से यूज़र आके बोलते हैं कि उन्होंने दूसरे ब्रांड का इंटरफेस यूज़ किया पर उन्हें उसमें कुछ मज़ा नहीं आया, क्योंकि उनका जो इंटरफेस था इतना आसान नहीं था यूज़ करने के लिए और इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं था, क्योंकि वो बहुत जो डिज़ाइन करते हैं वो मिक्सर का प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको मैच करने के लिए बनाते हैं। हालांकि मैकी में दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दोनों साथ ही साथ बना के बहुत यूजर फ्रेंडली बनाया जाता है। Okay, cool. The following year, it's like every year there's something new with the Master Fader. And 2014, DL32R was added to the hardware list. Master Fader 3 was released. हर साल कुछ ना कुछ वो ऐड करते हैं। 2014 में उन्होंने 32 चैनल का मिक्सर ऐड किया जो कि DL32R है, और वही साल में मास्टर फीडर 3 भी लॉन्च हुआ था। There's a major overhaul with the app. GUI reworked. If you were to compare the two skins, they look kind of different. There's the same team, but they look slightly different. We've added new mix view, mute views, view groups, master selector, mix selector, VCA, subgroups, matrix, IO patch, record and playback panels, quick access panels, tons and tons of new things on the Master Fader 3. ये ऐप में जो उनका जो लेटेस्ट था ये टाइम पे उन्होंने काफ़ी बड़ा चेंज आया ऐप में, क्योंकि अलग अलग डिटेल्स ऐड किए गए, म्यूट ग्रुप ऐड किया गया, VCA के ग्रुप ऐड किए गए, इनपुट आउटपुट का प्लेबैक या रिकॉर्डिंग के अलग अलग ग्रुप्स ऐड किए गए। तो बहुत पूरा 2013 के वर्जन 2 के ऐप में और वर्जन 3 के ऐप में उन्होंने पूरा जो उसका पूरा लुक फील और फंक्शनिंग था पूरा बदल दिया था। And this app is not only tied in for use with the DL32R. It's the same app. You can use it on the 806 and the 1608. There's no limitation. Whatever we put in for the DL32R, we'll add it on to the 1608 and the 806. जो उन्होंने ऐप 32 चैनल के लिए बनाया है वही ऐप को कंटिन्यू करके पूरे फैमिली पूरे परिवार जो मिक्सर का परिवार है सारों मिक्सर के लिए वही ऐप को लागू किया, तो एक ही ऐप से आप कोई भी मिक्सर को कंट्रोल कर सकते थे। Okay. So come the year 2015, Master Fader 4 was released. RTA was included, right, improved, and copy and paste function was added.
new quick assign functions was added. Master Fader 4 become a single app that year. So basically, there's no more My Fader. My Fader was taken away. It's just now one app that runs on the iPad and the iPhones. And instead of 10 devices being connected to a single network, it allows up to 20 wireless devices to connect to each network. 2015 में उन्होंने मास्टर फीडर 4 लॉन्च किया, जो कि चौथा वर्जन था। ये इन्होंने अलग अलग फंक्शन ऐड किए, जैसे कि कॉपी पेस्ट और अलग अलग फंक्शन ऐड किए, और साथ ही साथ उन्होंने ये बहुत ही सिंगल फ्रेंडली बनाया, क्योंकि जो पहले हमारे फ़ोन पे माई फीडर का ऐप आता था, अभी आपका फ़ोन हो या टैबलेट हो या पीसी हो, सब पे एक ही ऐप आएगा जो कि मास्टर फीडर है। और पहले जब 10 डिवाइस कनेक्ट कर सकते थे नेटवर्क पे, अभी आप 20 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। Okay, now we move on to the next year, 2016. 4.5 was released. At the same time, DC16 hardware control surface was released, adding on to all the extras that was added to 4.0. Spectrometer was added to 4.5, and the Master Fader 4.5 becomes integrated with the DC16 hardware control surface. पुराने वर्जन में जब उन्होंने एक RTA का फीचर ऐड किया, अभी स्पेक्ट्रोग्राम का फीचर उन्होंने 4.5 में लॉन्च किया। साथ ही साथ उन्होंने DC16 का जो कंट्रोल बोर्ड है, ये पूरा एक साथ कंट्रोल करने के लिए वो भी ऐड किया, जहाँ पे आप सारा इंटरफेस को एक बोर्ड से फिजिकल फीडर के साथ कंट्रोल कर सकते हो, और 3 iPad आप लगा के सारा कुछ एक साथ देख सकते हो। Unlike most hardware out there, the iPads that were docked onto the DC16 could be removed and be wireless device, and when it's placed back onto the hardware, the DC16 itself, it integrates itself. So it was very flexible for the engineer to use. तो जो पुराना जो अगर दूसरे मिक्सर के मुकाबले जहाँ स्क्रीन पूरा फिक्स है और आपको मिक्सर वैसे का वैसे यूज़ करना पड़ता है, जब आपका DC16 के कंट्रोल बोर्ड के साथ आप कोई भी iPad को अनप्लग डॉक से निकाल के अनप्लग करके पूरा वायरलेस बना के कहीं भी घूम सकते हैं, और उसको वापस डॉक में वापस लगा सकते हैं। So throughout the years of the Master Fader and the DL series, there was a very, very common request from our customers, and it was something that we were holding back. There were a lot of requests for Android compatibility, but we decided not to for many years to go on Android, because we thought Android wasn't ready yet because of all the different numerations of hardware out there. Some of them could be utilized in certain way, but not the other way. Some of them has got lesser GUI function. Some of them doesn't do multi-touch. So by 2018, we thought, okay, Android is kind of ready now. So we launched Master Fader 5 along with DL16S and DL32S. 2018 में उन्होंने इसका 5वां वर्जन लॉन्च किया, जहां एक पूरे सब सालों में एक ही रिक्वेस्ट था कि ये फीचर जो है सिर्फ एप्पल के डिवाइसेस के लिए, पर उनको एंड्रॉयड के लिए भी चाहिए था। पर उनको लगा कि एंड्रॉयड का जो इंटरफेस है रेडी नहीं है, जो उनके फीचर्स है, बहुत से फ़ोन्स में टच स्क्रीन नहीं है और बहुत से अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस है। 2018 में उनको लगा कि एंड्रॉयड के डिवाइसेस में अभी सपोर्ट काफ़ी सारा है, तो उन्होंने ये साल 2 नए प्रोडक्ट DL16S और DL32S के साथ मास्टर फीडर 5 लॉन्च किया, जो कि सारा iOS के साथ साथ एंड्रॉयड के लिए भी सपोर्ट दे रहा था। So as you can see, that's a long history. So this year, we finally have completed the circle. It's with Master Fader 5.1. ये लंबा हिस्ट्री है उनका, आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम से वो लोग iPad मिक्सर बना रहे हैं, और ये पूरा उन्होंने ये साल 2020 में
इसको कंप्लीट किया और अभी ये मास्टर फेडर 5.1 के बारे में हम जानेंगे. So, master fader at heart is the heartbeat of the system. The DL system has been proven with the intuitive workflow. It's a leader in the industry for wireless mixing. All right, it's completely customizable, scalable, and today we still think that it's one of the best app out there, and most people would agree. Most people who have used it would agree with us. जो मास्टर फीडर है वो पूरा ये डिजिटल वायरलेस मिक्सर का पूरा जो हार्ट बीट है, जो हर एक चीज़ उसको ये मास्टर फीडर से आप कंट्रोल कर सकते हो. और बहुत से लोग को आप पूछेंगे कि ये वायरलेस मिक्सिंग में सबसे बेहतरीन ऐप कौन सा है. लगभग सभी का जवाब आएगा कि जो मास्टर फीडर का ऐप है वो बाकी सब से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है. और आप एक बार उसको यूज़ करेंगे तो और दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तभी इसके वैल्यू का आपको पता चलेगा. You take this app to anyone from a new user to a professional engineer. They adapt to it very easily and find it very easy for them to understand and to use. आपका एकदम कोई बिगिनर यूज़र होगा या एडवांस प्रोफेशनल यूज़र होगा, किसी को भी आप पूछेंगे सब बोलेंगे भी बहुत इजीली आप उसको अडेप्ट कर सकते हो और बहुत आसान है उसको यूज़ करना. Okay. All right. So the Master Fader app provides complete wireless control, as we all know by now. All right. There's been millions of mix out there. All right. Super powerful, super easy mixing tool for any application. Obviously, for Google, for Android device, for iOS device. तो ये मास्टर फीडर आपको आपके एंड्रॉयड डिवाइस पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल के ये अपना ऐप स्टोर iOS के ऐप स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं आपके सारे मिक्सर्स को कंट्रोल करने के लिए. Okay, so available for, like I said, Android, available for iPhones, up to 20 device out there. Nothing out there, nothing, I would dare say, none of the device out there would allow that many wireless connection till today. आज तक कोई भी जो इनके जो कंपेटिटर है इतने डिवाइस को कनेक्ट करने को अलाउ नहीं करेंगे जितना मैकी में आप कनेक्ट कर सकते हैं. आप अगर आपका सिंगर स्टेज पे है उसको अपने लेवल्स एडजस्ट करने हैं, वो अपने फ़ोन से डायरेक्ट हर एक चीज़ को आपके डायरेक्ट मिक्स कंट्रोलर को कनेक्ट करके अपना लेवल्स एडजस्ट कर सकते हैं. सबको अपना अपना अलग अलग लेवल और EQ अपने आप खुद सेट कर सकते हैं. And today, 2020, we added compatibility with Windows and Mac OS. 2020 में अभी आप अपने विंडोज़ के पीसी या मैकबुक के पीसी भी के लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हो मैकी की वेबसाइट से. So Master Fader 5.1 supports DL1608, 806, DL32R, DL16S, DL32S. जो मास्टर फीडर 5.1 है आज के टाइम में आपके सारे DL सीरीज के मिक्सर को सपोर्ट करता है. One app for all the device. एक ऐप सभी डिवाइस के लिए. Okay, so as you can see why it's you easily fall in love with the app and why people like mixing and using the DL series. अभी देखेंगे कि लोगों को ये ऐप इतना पसंद क्यों है और ये इनको इसको यूज़ करने के लिए इतना प्रेफर क्यों करते हैं. Right, from the most simple mixes to the most complex that involve with a lot of massive processing, Master Fader allows all the control to be done with all these apps and all these platforms. बहुत से सबसे इजी मिक्सर को लेके सबसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिक्सर को आप देखेंगे तो ये मास्टर फीडर सब मिक्सर को आपके कोई भी डिवाइस से कंट्रोल करने में बहुत
मदद करता है और बहुत ही आसान रखता है. Okay. So not all apps are created equal. I probably stated that many times, right? The experience is very important. That's why we stick to one single app throughout and making it very seamless to learn, to use, right? The experience are very natural. ये आपके एक्सपीरियंस को बहुत आप जब ऐप को यूज़ करेंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा है इसको सही तरीके से इम्पोर्टेंट देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको ये कंफर्ट रहना चाहिए कि आपको जो पसंद है उसके हिसाब से आपको ये पूरे पैरामीटर्स को एडजस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. Okay. Getting to control things, you want to do it quickly and you want to make sure it works well and stable. That's why we invest so much time on Master Fader, the app itself. हर एक चीज़ उसका बहुत अच्छी तरीके से चलना चाहिए. ये ध्यान में रखते हुए मैकी इसके लिए बहुत सा टाइम मास्टर फीडर के डिज़ाइन में बिताती है. Okay. And another thing that's really important is the UI itself needs to be customizable for the user, not the way we want it to be, but the way the user want to use it. और दूसरा बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो ऐप है या जो यूज़र इंटरफेस है उसको यूज़र के प्रेफरेंस के हिसाब से कस्टमाइज होना चाहिए. आप देख सकते हैं कि अलग-अलग कलर असाइन कर सकते हैं या ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैकी ने बोला यही इसको ऐसे अपने तरीके से चलाना चाहिए. जब यूज़र को चाहिए कि उसको अलग-अलग लेबलिंग करना है, अलग-अलग कलर असाइन करना है, ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अलग-अलग चीज़ें की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए यूज़र के लिए. Okay. And I guess the most important thing to everyone, the app needs to be free. So the app's free. We don't charge you. You don't need to own the hardware. All you need to do is just have internet connection, have a computer or an iOS device or an Android device. Go to Apple Store or Google Play Store, download the app, and it's all yours. बहुत ज़रूरी चीज़ ये ऐप पूरा टोटली फ्री है. आप उसको डाउनलोड करके आप अपने डेमो मोड पे यूज़ कर सकते हैं. अगर हार्डवेयर भी नहीं खरीदना चाहते और इसको पूरा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, पूरा ऐप फ्री में डाउनलोड करके इसको पूरा यूज़ कर सकते हैं. ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर पे सिर्फ आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए या आप अपने पीसी पे मैकी की वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं. Okay. All you need to do is download that. Okay, if you were to be using an Android, which is a 32-bit version, please use that link that I have down there. You would see the link on our website too. So this is a Master Fader APK for 32-bit version. अगर आपका 32 बिट वर्जन का एंड्रॉयड डिवाइस है तो उसको यूज़ करने के लिए आप मैकी की वेबसाइट पे ये एड्रेस जो नीचे लिखा है उस पे जाके 32 बिट वर्जन को आप डाउनलोड कर सकते हैं. So that version will not be available on Google Play Store. क्योंकि ये वर्जन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा नहीं. And on top of that, we have the Windows and Mac version. इसके साथ विंडोज़ और मैक के लिए अलग वर्जन है जो आपको मैकी की वेबसाइट से मिलेगा. Which is available on our website. Yeah. Mackie /product /master-fader-control-app. You can move on. Just choose one of the platform that you need, download that, and you're good to go. By now, sorry. जो भी चाहिए आपको विंडोज़ या मैक आप सिलेक्ट करके उसको डाउनलोड करके आप उसको वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं. Yeah. So I really hope by now you would have the app, all right, with you. If you don't, please go to the stores to download it, and you can join us for furthermore experience in the next couple of minutes to come. अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है एक अच्छा आइडिया होगा कि आप इसको डाउनलोड करें क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम इसको साथ में साथ एक साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं. Okay, so before I go on to physically connect to the mixer or show you the Master Fader app,
like to introduce you a couple of things, right, that I want you to get very familiar with. These are probably the three things that you need to know and get familiar with. Once you know where they are, everything is smooth from here on. चालू करने से पहले एक थोड़ा सा अलग अलग उसका क्या फीचर्स कौन से सेक्शन में है इसका एक छोटी सी जानकारी दे अगर देखेंगे तो यूज़ करने के टाइम हमको बहुत आसानी होगी जब हम एक साथ मिक्सर को यूज़ करेंगे और कौन सा एरिया कौन से फंक्शनैलिटी का के लिए बनाया गया है उसको हम देखेंगे अभी. Operation is super easy. All right, there's no deep diving hidden layers, pages, menus to dive into. All right, so for Master Fader UI, there are first thing to remember is the navigation bar. You can see it on your screen. It's highlighted in red. कोई भी छुपा हुआ लेयर या पेज नहीं है. ये बहुत इजी है यूज़ करने के लिए. सबसे ऊपर है हमारा नेविगेशन बार जो आप देख सकते हैं रेड कलर में मार्क किया गया है. I'm gonna use my cursor. Follow my cursor. This is the overview. जो एकदम लेफ्ट में जो बटन है जस्ट लेट मी जस्ट ट्राई एंड हाईलाइट दिस जस्ट होल्ड ऑन. जो रेड कलर में मैंने मार्क किया है लेफ्ट में वो ओवरव्यू है. आपका सारे चैनल्स का ओवरव्यू है. Okay, so overview is where most, you can possibly see everything that's going on your mixer. ओवरव्यू में आप मिक्सर में क्या क्या हो रहा है आप एक साथ देख सकते हैं पूरा. Okay, the next to it will be your mixer view. उसके बाजू में आप देख सकते हैं उसका एक मिक्सर व्यू है. तो वो हमारा मिक्सर व्यू है उसके बाजू में. All right. Move next to that would be your channel view. उसके बाजू में अगर इंडिविजुअल चैनल का व्यू है उसको मैंने ब्लू में मार्क किया है. All right. This is your display. उसके बाजू में पूरा डिस्प्ले है. So this would display all your parameters that you're on. जो भी आप पैरामीटर को चेंज करें ये डिस्प्ले में आएगा. The next one would be your effects menu. उसके बाजू में हमारा इफेक्ट्स है. And the next would be your device menu. उसके बाजू में आपका डिवाइस का मेन्यू है. All right. So device menu will let you select which hardware you're connected to or you want to work offline with. आपको डिवाइस मेन्यू में आप कौन से डिवाइस के ऊपर काम कर रहे हैं या अगर ऑफलाइन में कौन से डिवाइस टाइप के आपको काम करना है या आपको डिवाइस सिलेक्शन में जाना पड़ेगा. Next one, which has got a gear, that's the tool menu. This is for deep settings. ये अलग अलग आपका सेटिंग्स के लिए आपका एक गियर जो आपका गियर का आइकन है उसको आपका सेटिंग्स आपके सारे. Next to that would be your patching I/O. This is where you do your routing. उसके बाजू में आपका जो पैचिंग का इनपुट आउटपुट कैसे पैचिंग करते हैं उसका राउटिंग इधर आप सिलेक्ट करेंगे. Next to that would be quick access panel. This is where you do your quick mutes and volume controls of your monitors and everything. उसके बाजू में आपका क्विक एक्सेस पैनल है जहां आपका अपना क्विक म्यूट या वॉल्यूम एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं. So the next one will be show. So this is where your snapshots are, your show menu is. उसके बाजू में आपका शो है जहां आपके स्नैपशॉट्स है और शो मेन्यूज है इसके यहाँ पे. Right. So altogether, this is called the navigation bar. So this is the place where you move to when you do your settings. ये सब एक साथ को आप नेविगेशन बार बुला सकते हैं. ये जब भी आप सेटिंग्स कर सकते हैं आप इधर पे आप नेविगेट कर सकते हैं. Yep. Next would be your selector strip. उसके बाजू में एक है सिलेक्टर स्ट्रिप हमारा. The selector strip, here you find your mute groups. इस पे आपका अलग अलग म्यूट ग्रुप्स है. Your view groups.
आपके जो व्यू ग्रुप्स है, कौन से चैनल्स को आपको व्यू करना है, तो अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं उसका। your mix selector, आपका मिक्स सिलेक्टर, and all your master output selector. और फिर उसके साथ ही साथ आपके सारे मास्टर आउटपुट सिलेक्टर। All right. Next would be a master fader strip. This is always, most of the time it's always there. It's the main output strip. उसके साथ ही साथ आपका मेन मास्टर फीडर स्ट्रिप दिखेगा, ये मेन आपका मेन आउटपुट स्ट्रिप है उसका। So that's it. That's all you need to remember. All right. That this three portion would be all that you need to know. You do not need to know anything else. All right. So it's so simple. There's no deep diving, unlike other mixers. सिर्फ यही आपको देखना है और कुछ नहीं, ये 3 मेन्यू को आपने देखा तो बस हो गया आपके लिए। Next, I'm going to show you the flow chart of the design of the GUI, and you probably go, "What? It's so simple." इसके बाद हम लोग एक फ्लो चार्ट देखेंगे पूरा यूजर इंटरफेस का, और आप उसको देख के आपको मालूम पड़ेगा कि ये बहुत बहुत ही सिंपल चीज़ है। So this is the full flow chart, right? As you can see, this is the view area, this is the mix area, this is your DSPs, this is where all your patching and everything is, your setup is, right? Recalling of the show, this is your routing, and this is your connection. That's it. Simple. तो आप देखेंगे इसका बहुत ही इजी व्यू पैनल है, जो मैंने रेड में मार्क किया, ये हमारा व्यू एरिया है। उसके बाद ये पूरा हमारा व्हाट इज द अदर एरिया This is the mix area. ओके, the दिस इज mix. मिक्स एरिया। Yeah. ओके, Yep. ये हमारा मिक्स एरिया है। उसके बाजू में हमारे पूरे डीएसपी है, यहाँ पे जो इफेक्ट्स है अलग अलग। और अगर ब्लू में आप देखेंगे ये आपका पूरा राउटिंग है यहाँ पे। एंड देन व्हाट इज द Setup. वन, दिस इज अ सेटअप। Yep. तो ये आपका जो है ये पूरा आपके सेटअप का व्यू है। और एंड व्हाट इज द लास्ट वन टुवर्ड्स द एंड, This is your devices or your connections. और एंड में आप देखेंगे सारे आपके डिवाइसेस और कनेक्शंस इधर साइड में। ये पूरा इसका वर्किंग फ्लो चार्ट है। This is so simple, very, very simple to use. And that's the concept when we first started thinking about how to do the master fader. From day one, when we started to now, we have stuck to this and we did not go anywhere else. ये स्टार्टिंग से लेके अभी तक उन्होंने यही फ्लो चार्ट को यूज़ करके ऐप को डिज़ाइन किया है, और इसके आधार पर मास्टर फीडर सारा स्टार्टिंग से लेके अब तक ऐसे ही बनाया गया है। Okay, I'm going to move on to the next slide. All right, so now you look at the overview. The overview will show you all the inputs and outputs and all the channels. From here, most of the time when you're done with your setup, when you're done with your sound check, this is the page to be. ये ओवरव्यू का टैब बटन है जो टॉप लेफ्ट में आपने देखा था। अगर हम इसको देखेंगे तो आपका सेटअप के बाद आपको सारे चैनल एक साथ देखने हैं, तो आप ओवरव्यू पे जाएंगे। Okay, next one will be your mixer view. Mixer view, I think everybody would be very familiar. It's just like looking at the analog mixer from the top. मिक्सर व्यू में बहुत इजी है, जो आप सबको आदत है वो एनालॉग मिक्सर को ऊपर से देखने, अगर एक देखेंगे तो वैसे व्यू है आपका। So from here you can see the EQ, you can see your gain, you can see your compressor, whether it's working, it's running. You can do your pan, your mutes, your fader of the channels and solos, and so on and so forth. तो इसमें आप अलग अलग चीज़ EQ, गेन, पैनिंग, फेडर का कंट्रोल सब एक साथ देख सकते हैं। All right. Next one would be your channel view. Think of this as the channel strip. उसके बाद है हमारा चैनल व्यू। आप इसको एक चैनल स्ट्रिप को की तरह आप इसको सोच सकते हैं, एक चैनल स्ट्रिप है पूरा। So think of this as you're suddenly having a magnifying glass looking into the channel, zooming into that channel itself. From there you can do your routing, to your subs, to the VCAs, to the mutes, to the view groups,
to the main, left, right. You can do your gains, you can do your EQs and blah, and so on and so forth. तो अगर आपने एनालॉग मिक्सर पे अगर मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ किया और एक ही चैनल को अलग से देख रहे हैं तो उसका व्यू ऐसे आएगा जहाँ पे आप अलग अलग असाइनमेंट कर सकते हैं, सब ग्रुप को या VCA या म्यूट ग्रुप या अलग अलग व्यू ग्रुप को आप अपने अपने अलग अलग ऑक्स आउटपुट के लेवल सेट कर सकते हैं। ये सब आपके इंडिविजुअल चैनल को कंट्रोल में आप इसको देख सकते हैं। Okay. All right. So we are working with digital console, right? Current, right? Yeah. Okay. So unlike analog console, the scale that you use for your VU is dBFS. जैसे So- आपका एनालॉग व्यू ये हम डिजिटल डोमेन में इसको कर रहे हैं। जो हम इसको व्यू देखेंगे इसको डेसिबल फुल स्केल की तरह देखेंगे जो अपना हमारा VU मीटर है। In digital metering, you do not want to hit 0 dBFS because that's clipping, right? That's distortion coming in immediately. तो हम जब डिजिटल मिक्सर पे काम कर रहे हैं हम 0 dB को टारगेट नहीं करते क्योंकि वो क्लिपिंग है और डिस्टॉर्शन आ रहा है आपके चैनल में। On an analog console, if you're working with dBu meters and stuff like that, when you get to the red region, you don't get clipping, you get slight saturation, right? With digital mixer, you don't get saturation at all, so it's full clipping, you're square waving. So our meters are put at -3 dBFS when you see the first sign of it being red. तो हमारा जो हम एनालॉग में काम करते हैं उस पे आप जब 0 dB की तरफ जाते हैं आपका क्लिपिंग नहीं बल्कि सैचुरेशन होता है। डिजिटल डोमेन में सैचुरेशन नहीं बल्कि आपका पूरा क्लिपिंग चालू हो जाता है। इसके लिए मैकी अपने मिक्सर्स में जो मीटरिंग के पे जो रेड लाइट जब जलती है वो 3 dB फुल स्केल की तरफ -3 dB फुल स्केल के लेवल पे उनका लेवल का उसके बाद आपका रेड इंडिकेटर चालू होता है। So if you see red on your meter, don't panic, all right? You still have quite a bit of headroom before it clips. तो आप अगर रेड लाइट आप देखते हैं इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास फिर भी थोड़ा हेडरूम है क्लिप होने के पहले। Okay, and you can see a yellow and green section. When we hit to the first yellow, that's -12 dBFS. तो आप देख सकते हैं एक येलो और ग्रीन सेक्शन जैसे आप या ग्रीन से आप येलो की तरफ जाते हैं तो वो -12 dBFS है। Right. On the first point of audio indication, that would be -60 dBFS. जो ऑडियो का इंडिकेशन की तरफ देखेंगे तो एकदम जो उसका नीचे का हिस्सा है वो -60 dBFS है। So the scaling of the VU meter is a full 60 dB visual representation. तो उसका आपका जो स्केलिंग है आपका फीडर का पूरा 60 dB फुल स्केल का रिप्रेजेंटेशन है। All right. Okay, cool. Now let's talk about effects. We all love effects, all right? Okay. India love effects. Yeah, we love effects. Okay, so when we first started building the DL, we only had 2 effects, and then we brought on to 3 when we launched the DL32R. We've pushed it up to 4 now. Instead of it being fixed like the previous one, which we had 2 reverb and 1 delay, now it's all your choice. पहले हमारे पास जो इफेक्ट्स थे पहले 2 थे, उसके बाद उन्होंने 3 किया, 3 इफेक्ट्स इंजन डाले, अभी उन्होंने 4 इफेक्ट्स इंजन डाले। पहले जैसे कि फिक्स था जैसे कि 2 रिवर्ब और 1 डिले मिलता था, अभी आपको 4 अलग अलग इंजन मिलते हैं जहाँ पे आप कोई भी इफेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। Okay, so what do we have in there? The red effects, the red racks, okay, are all reverb effects. जो आप लेफ्ट में आप देख सकते हैं ये सारे आपके रिवर्ब के इफेक्ट्स है। Next to that will be the blue ones, which are all delay. जो ब्लू में है वो सारे आपके डिले के इफेक्ट्स है।
And then on the purple ones, they are all modulation effects. जो आपके पर्पल कलर में है वो सब आपके मॉड्यूलेशन के इफेक्ट्स है. Right. So all these effects are all professional effects with parameters for you to tweak to the point that you want. So if you don't like your effects, your reverb too bright, you can always tail it down. You can always do a high frequency damping on it. You can roll it off, or if you think it's not bright enough, you can push it up, or if you think that the effects decay is not long enough, you can always extend it. If you think the effects is too blur, too much diffusion going on, you can lower your diffusion. So it's all up to you. You're given the liberty to do whatever you want and build whatever you want and make the presets that you want. तो एक बार आपने कोई भी इफेक्ट सिलेक्ट किया, उसके सारे पैरामीटर को आप बदली कर सकते हैं. उसको अगर आपको एक रोल ऑफ करना है या एचएफ को थोड़ा डैम्पिंग करना है, थोड़ा अलग अलग डेप्थ देना है, तो ये सब सारे पैरामीटर आप इसको बदली कर सकते हैं आपके प्रेफरेंस की तरह. Okay, so it's very flexible, and they're not fixed as in a point that you only have 2 reverb and 2 delay or whatsoever. You can use up to 4 reverb if you need 4 reverb. If you want 4 modulation effects, very rare, you can too. तो अगर आपको ज़्यादा इफेक्ट्स चाहिए, आपको अगर 4 अलग अलग रिवर्ब चाहिए तो आप 4 रिवर्ब यूज़ कर सकते हैं. तो जैसे भी आपको प्रेफरेंस आपकी अच्छा लगता है, आप वो हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं. And obviously, for those who doesn't like to be challenged to make their own presets, we have made tons of presets in there for you to use. और जिसको अपना खुद के प्रीसेट बनाने नहीं है, उसके मैकी के अंदर आपको बहुत से अलग अलग प्रीसेट्स मिलते हैं जो आप खुद यूज़ कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट प्रीसेट जो है. Okay, the next one will be devices. All right. I just want to cut in on that just to say that that's a really good option in Mackie because very few other apps give you that kind of control for the effects on the app itself. Most other brands, you can only do that from the mixer. और अपना Mackie में सारे effects का जो parameters है आपको app directly आपको change कर सकते हैं. Thank you. I'm glad you liked it. All right. So the next one would be devices. Like I said, the app can be downloaded and be used in simulation or offline mode anytime, right? So we have all the 5 devices from the DL 1608 to 806 to DL Day2R, 16S, and to DL 32S. One app, if you need to make a setting for a DL32S, all you need to do, turn on the app, go to offline mixer, select DL32S, and select that, and it will simulate, get onto offline mode, and from there you can plan and do all your routings and setup before you even connect with the device. तो जो हमारा डिवाइस मेन्यू है उसमें आप अलग अलग डिवाइस देख सकते हैं. अगर आपका कोई एक्चुअल हार्डवेयर आपके पास नहीं है तो आप उसको ऑफलाइन मोड में भी आप देख सकते हैं, जहाँ की जैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे जो डेमो मोड में वो वही मिक्सर का पूरा एक लेआउट लोड कर लेगा, एक डमी मिक्सर जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं. So in cases of, like, say if you have an entertainment venue that's got 3 shifts, right? And this 3 shifts does very different type of setups, different type of music, different type of bands, different band performing at those different hours, and you got 3 different engineers. These 3 different engineers can actually have their own iPads or their own devices, right? Do all your planning and decide what you want for the band that's coming up, right? That you are in charge of, and do it offline. And when you get to the venue, get it up, and you're ready to go. Or should I say, you're at least 80% before the show. अगर एक ही वेन्यू में सपोज 3 अलग अलग बैंड परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब बैंड परफॉर्म कर रहे हैं 3 अलग अलग इंजीनियर के पास 3 अलग अलग खुद का आईपैड है या कोई भी टैबलेट या पीसी है, वो आने के पहले ऑफलाइन मोड में उसका लगभग पूरा सारा सेटअप
इफेक्ट्स EQ या सब कुछ ऑफलाइन मोड पे लोड करके आने के बाद उसको उनको सिर्फ कनेक्ट करना है, तो एटलीस्ट ऑलमोस्ट 80% उनका काम आने के पहले ही खत्म हो जाता है. Okay, so as you can see, the next slide, this slide has got one more layer. It says detected mixer. All right, this is what you see when the network finds a presence of a device, hardware device. जब आपका नेटवर्क में आपका डिवाइस एक्चुअली कनेक्टेड है तो उसमें वो डिटेक्टेड मिक्सर में दिखेगा आपको कौन सा मिक्सर है. In each network, you can have more than one device. You can have one router to as many devices as you want if you have a switcher. So you can see a rows of multiple devices, and you can select each and any one of the device to connect to at one time. अलग अलग डिवाइसेस को एक ही नेटवर्क में अलग अलग डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं. एक राउटर पे अनगिनत अलग अलग डिवाइसेस को आप लगा सकते हैं, और यहाँ डिटेक्टेड मिक्सर में आपको हर रो में आपको जो भी डिवाइस नेटवर्क पे है वो दिखेंगे यहाँ पे. So if you're running something like installation for entertainment venue, and you've got multiple rooms, multiple mixes, right? But you've got one shared network, all right? That's for a mall or for a hotel. All you need to do is just hook up all the mixes to that particular network, all right? And to join that network, and you just need one single iPad. Walk across all the different rooms and connect to each device when you're in the room, right? You do not need to keep switching different iPads or sync different iPads, one iPad or one computer to all the different mixes. आपका अलग जैसे इंस्टॉलेशन वेन्यू में अलग अलग रूम्स है, अलग अलग रूम्स में हमने मिक्सर लगाया है. वो सारे मिक्सर को जैसे कि अगर होटल है, सारे मिक्सर को एक ही नेटवर्क पे आप लगा सकते हैं और एक ही आईपैड के साथ अलग अलग रूम में जाके कनेक्ट करके वो मिक्सर को देख सकते हैं. आपको अलग अलग मिक्सर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग आईपैड या टैबलेट या फ़ोन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. Okay, so this is where you do your settings, all right? I'm not going to talk about this too much just yet. Next one will be your Sorry, Karen, yes. इसके पहले हमने देखा है कि सेटिंग्स है, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ अभी डिस्कस नहीं करेंगे अभी के लिए. उसके बाद है एनीथिंग एल्स यू वांट टू टॉक अबाउट? Nope, I'm going to skip this for now, all right? The next one would be access limit. This is where you lock parameters of the mixer from your wireless device. जो आपका वायरलेस डिवाइस में आपको कुछ पैरामीटर लॉक करना है, उसके आप एक्सेस को एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं. Okay, next will be your help. So this connects you to our servers, our internet pages, our documentations and stuff like that, our YouTube pages and stuff like that. If you need any help, just go online. This is where you find help. अगर आपको कुछ सहायता चाहिए या कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन या कुछ चाहिए, आप हेल्प सेक्शन में जाके उनके अलग अलग सपोर्ट पेजेस पे आप जा सकते हैं. On more, you will find the version of the software. मोर पे जाके आपको सॉफ्टवेयर का वर्जन दिखेगा. All right. And so you will find the connected device, what firmware is it on, what model and everything. It's all here. आपके डिवाइस जो हार्डवेयर है उसका फर्मवेयर सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा. Okay, so that's your settings, 2.2s. Next will be your I/O patch. This is the first tab of the 8, which is mic free. सो ये आपका इनपुट आउटपुट का पैचिंग का सेक्शन है. जो पहला टैब है उसका वो माइक 3 है. Right here you do your mic gains and turn on and off your phantom power. यहाँ पे आप अलग अलग माइक गेन सेट कर सकते हो और आपका फैंटम पावर चालू या बंद कर सकते हैं. Next would be your oscillator. The oscillator is a free oscillator, so basically you can have any frequency and whatsoever to be sent to anywhere you want it. तो यहाँ पे आपका ऑसिलेटर है, आप कोई भी फ्रीक्वेंसी या कुछ भी टोन आप जनरेट करके कहीं भी आप उसको राउट कर सकते हैं. Okay, you've got two quick inputs, input A and input B. This
two inputs are switchable. यहाँ पे दो इनपुट्स है, इनपुट ए और इनपुट बी, इसको आप स्विच कर सकते हैं. All right. Next would be a USB. So this is for recording or playback from USB devices. ये आपका इसके बाद आपका यूएसबी दिखेगा, यहाँ रिकॉर्डिंग या प्लेबैक के लिए है यूएसबी डिवाइसेस से. Next would be output, the physical outputs on the DL mixer itself. This is the routing for it. उसके बाद आप आउटपुट देख सकते हैं, इसका पूरा राउटिंग आप पूरे आउटपुट की तरफ देख सकते हैं. Okay, next would be your Dante, where you want the Dante to be sent to, sent from, and everything else. उसके बाद आपका डांटे का राउटिंग है, जहाँ से आप भेजना चाहते हैं और जहाँ पे भेजना है, उसके पूरे राउटिंग को आप देख सकते हैं. The Dante function is only found on DL32R. डांटे का फंक्शन सिर्फ DL32R पे है, क्योंकि इस पे ही आप डांटे का कार्ड लगा सकते हैं. Next would be your talkback. So basically where you want to send your talkback to, which mix you want to send your talkback to. तो आप लास्ट में आप टॉकबैक को कौन से मिक्स पे आपको देना है, आप टॉकबैक पे आपको उसको असाइन कर सकते हैं. Okay. On the DL1608 and 806, obviously you do not have that many choices when it comes to routing, but you can record any output to the iPad itself. DL जो छोटे मिक्सर है 806 और 1608, आप उस पर ज़्यादा ऑप्शन थोड़े कम है, बट आप उसको रिकॉर्डिंग के लिए आप अपने आईपैड पे डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं. So let's say you have a band playing and somebody giving a speech, and all you need to record is the speech, but you do not have separate mix. So how do you do that? The two are going on at the same time. All right. So all you need to do is, instead of sending a mix or whatsoever, you can directly record whatever is coming in from the mic pre itself, route that to the iPad, and you can do that too. तो अगर जैसे कि आपका कोई इवेंट है जहाँ एक बैंड परफॉर्म हो रहा है और कुछ स्पीच भी चालू है, आपको सिर्फ स्पीच रिकॉर्ड करना है, तो इस पे आप सिर्फ वो माइक्रोफोन के इनपुट को अपने आईपैड पे राउट करके रिकॉर्ड कर सकते हैं. So you can take that recording and manipulate it later and give it back to the client. उसके बाद आप वो रिकॉर्डिंग लेके उसको बदल के क्लाइंट को वापस दे सकते हैं. Okay, next would be recording and playback. This is probably very familiar with everyone. It's just like your Windows media player. So one thing I would like to highlight, the DL32R does multi-track recording. This is only available for the DL32R. तो उसके बाद है रिकॉर्डिंग का टैब. रिकॉर्डिंग काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे पुराने कैसेट प्लेयर या विंडोज़ पे आपका रिकॉर्डिंग रहता है, वैसे ही रिकॉर्डिंग है. मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग सिर्फ DL32R पे है. Okay, quick access panel. So this one allows you to do your muting of the effects quickly and clear your solo quickly. Below that, you will have a monitor level, right? So you can have a wedge monitor, or you can have IEMs where you want to control your levels. You can change your levels up, and talkback level, talkback buttons. लास्ट में जो उनका क्विक एक्सेस सेक्शन है, वहाँ पे आपको अलग अलग म्यूट के कंट्रोल्स मिलेंगे या आपके सोलो को क्लियर करने को मिलेगा. मॉनिटर का लेवल आप देख सकते हैं या टॉकबैक का लेवल आप सेट कर सकते हैं. Okay, and next one will be show. All right. Show is where you keep all your snapshots. You modify all your snapshots. You take all your snapshots. शो के सेक्शन में आप अपने मॉडिफाई या आपके स्नैपशॉट्स को लेके या आप उसको बदल सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं. So there's two different tabs. One is current show, which is the show that's running now, and offline shows for shows that are not running. दो टैब्स है इसमें, एक तो करंट शो जो चल रहा है यहाँ पे, दूसरा है ऑफलाइन शो जो अभी नहीं चल रहे. Okay, we'll dive into all this later. Okay, so that's offline shows. Okay, so mix view. It's where you find all your different mixes. मिक्स व्यू में आपके अलग अलग मिक्स देखने को मिलेंगे आपको. Okay, so you can see all the different mixes that you have on the DL32R. One left, right, 14 oxes, your effect sends, your subgroups, your VCAs, your matrix.
let's say I want to select aux6. All I need to do is go to the aux6 tab, and I am on the aux6 mix now. तो आपके जो भी आपको अलग अलग तरीके के मिक्स सेटिंग्स आपको चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर जैसे ने अभी सिर्फ उनको aux6 का उनको टैब चाहिए तो उन्होंने aux6 सिलेक्ट करके उनके पूरे aux6 के कंट्रोल मिलेगा उनको। So you can see the master fader now has switched over from left right to aux6. तो जो उनका मेन है वो लेफ्ट राइट के बदले में aux6 आ गया है यहाँ पे। To go back, all I need to do is tap on the main section and you go back to left right. वापस जाने के लिए उनको सिर्फ मेन सेक्शन पे क्लिक करके लेफ्ट राइट की तरफ जाना है। Okay, so next will be your view groups. उसके बाद आपके व्यू ग्रुप्स है। View groups are great for times when you do not want to see all the different channels. You just want to see selected channels. You have up to 6 view groups that you can program. व्यू ग्रुप्स तब है जहाँ पे आपको सारे चैनल नहीं देखने हैं, सिर्फ कुछ चैनल देखने हैं। आप 6 व्यू ग्रुप आप सेट कर सकते हैं। Right, so now I've selected channel 1, 2, 13, 14, 25, 26, subgroup 1 and VCA 1. यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू ग्रुप ए में उन्होंने चैनल 1, 2, 13, 14, 25 और 26 सेलेक्ट किया है और सब ग्रुप 1 और VCA 1 और ये व्यू ग्रुप का अलग से नाम भी रख सकते हैं। I'm going to select view group A and see what happened. So as you can see, the corresponding channels are on the screen now. आप देख सकते हैं जो व्यू ग्रुप ए में जो चैनल्स है वही आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। So this allows you to quickly maneuver to the mix that you want to. इससे आप कोई भी अलग अलग मिक्स पे एकदम जल्दी जा सकते हैं। Right, so that's the view group. Okay, let's go back to everything. Now let's talk about the mute groups. Right, the mute groups it's very similar with the view groups. Think of it, instead of viewing, this one is for muting. तो म्यूट ग्रुप्स में अलग जैसे व्यू में हम अलग अलग चैनल्स को देख रहे हैं, म्यूट ग्रुप्स में हम वो ग्रुप को म्यूट कर सकते हैं। So let's say you've got maybe the drums, you want to mute every single one of them. That could be maybe 8 microphones or more. You can assign it. तो जैसे कि आप ड्रम सेट में अगर ऑलमोस्ट 6-7 माइक्रोफोन या 9 माइक्रोफोन एक साथ लग रहे हैं और उनको एक साथ आपको म्यूट करना है तो आप उसको असाइन कर सकते हैं। So in this instance, I'm just going to do a couple of the odd channels, 1, 3, and 5. यहाँ पे उन्होंने एक हॉट चैनल जो 1, 3 और 5 और 7 यूज है वो एक साथ असाइन किया है। So these 4 channels, whenever I hit mute 1, you're going to see the 4 channels being muted. तो जब भी उन्होंने ये म्यूट 1 सिलेक्ट किया है ये 4 चैनल म्यूट हो जाएंगे। Right. So it's really simple, very quick. Okay, so in the next one will be your masters, which is all your output faders. और उसके बाद है मास्टर जो कि आपके सारे आउटपुट के फेडर्स है। So you can actually have an iPad of such, give it to the boss, and he takes care of the faders to all the different rooms whatsoever. That's one way of doing it. तो ये आप अपने बॉस को देके वो अलग अलग रूम्स का आउटपुट यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। Okay, so I was just kidding down there. So you see all your aux, you see your effects, you see your subgroups, and you see your VCAs and your matrix. तो आप देख सकते हैं ये अलग अलग है, आपके ऑक्स है, इफेक्ट्स है, सब ग्रुप्स है, VCA है और आपके मैट्रिक्स है। All right, so hang on a second. All right, so now it's all the individual, your left, right, your aux, the effects, send, subgroups, the 6 VCAs, and the 6 matrix. तो जैसे कि जैसे ने दिखाया या आप एक साथ सबको देख सकते हैं या लेफ्ट राइट को देख सकते हैं या उसके बाद आपके सिर्फ ऑक्स चैनल को देखना है वो देख सकते हैं, इफेक्ट्स को देखना है सिर्फ इफेक्ट्स को देख सकते हैं, सब ग्रुप है एक ग्रुप में, आपके VC है एक ग्रुप में और आपके मैट्रिक्स है 6 मैट्रिक्स एक ग्रुप में। Okay, one last one before we switch over to the mixer. Multi-select.
multi-select, this tab allows you to mix and match anyone in this group, right? So let's say I want to have VCAs and matrix on my view, all right? All I need to do is hit multi-select, select matrix, select VCA. I can see both at the same time. मल्टी सेलेक्ट में आप कुछ ग्रुप को कंबाइन करके एक साथ देखना है, तो जैसे कि अगर आपको मैट्रिक्स और वीसी एक साथ देखना है तो आप मल्टी सेलेक्ट करके उनको एक साथ सेलेक्ट यूज कर सकते हैं. Okay, cool. Right, from here onwards, I'm gonna switch over to the app. While I switch over to the app, I'll let Luis talk a little, maybe introduce himself in the Colombian way. जेसन अभी स्विच कर रहे हैं तब तक लुइस अपना एक खुद जेसन मैकी DL32R को कनेक्ट करेंगे, तब तक लुइस कुछ बोलना चाहते हैं. Well, the only thing I can say is that it's 5 in the morning in the US. So I'm still in the process of waking up. I hope I am excitable enough to keep you awake through this treacherous time of the day. Oh no. अभी सुबह के 5 बजे है, तो अभी उठ के इनको ये प्रेजेंटेशन अटेंड करना था, तो इसके लिए ये इमीडिएट आए हैं. Okay, so this is the. Can everybody see the master fader now? Yes. Okay, great. So we are live with a master fader. All right. So this is not a presentation anymore. We're on the mixer itself. अभी ये प्रेजेंटेशन नहीं है, हम मिक्सर पे एक्चुअली काम कर रहे हैं. Okay, so first thing before I start, I'm going to go to the device. As you can see, I've got I'm offline now on the DL806. ये आप देख सकते हैं डिवाइस में ऊपर के डिवाइस ऑफलाइन है और डिटेक्टेड मिक्सर में एक DL32R है. So if you were to look at this, you can see 8 channels. You can see 2 effects, 4 subgroups, and 4 VCAs. तो आप देख सकते हैं इस पे 8 चैनल है, आपके सब ग्रुप्स है, इफेक्ट्स है, VCA ग्रुप्स है. Right. Next, I'm going to switch over to the तो 1608. 806 का अगर आप डेमो वर्जन देखेंगे तो अभी ये 1608 में आप देख रहे हैं. You can show the 1608. Okay, so now I'm on the 1608. As you can see, there's 16 channels now. All right. Same 2 effects, 4 subgroups, and 4 VCAs. 1608 में 16 चैनल है, 2 इफेक्ट्स है, how many subgroups are there? 4 subgroups and 4 VCAs. 4 सबग्रुप और 4 VCA है. Right. Next, I would be obviously on the DL16S, right? उसके बाद हम DL16S को देखेंगे क्योंकि 32R पे हम लाइव करेंगे. Second, let me quit the keynote to get more processing power. Okay, so on the 16S, now you see a slight difference. We've got an IO patch down here now. 16S में आप देख सकते हैं आपको इनपुट आउटपुट पैच मिल रहा है नीचे. Okay, so obviously we have 16 outputs. We suddenly have 4 effects instead of 2. यहाँ पे 2 इफेक्ट्स इंजन के बदले में 4 इफेक्ट्स इंजन है. We've got 6 subgroups now. We've got 6 VCAs. 6 सबग्रुप और 6 VCA हैं. Right, and DL32S. Okay, so 32 inputs, 4 effects, 6 subgroups, 6 VCAs. 32 इनपुट, 4 इफेक्ट इंजन, 6 सबग्रुप और 6 VCA. And obviously DL32R. Right, so it's just one app that allows you to work very seamlessly for all the 5 different devices. ये एक ही ऐप है. अभी हमने DL32R को कनेक्ट किया है. ये एक ही ऐप में आप सारे प्रोडक्ट्स को एक कनेक्ट कर सकते हैं. Okay. Sorry, there was one question as to what are the main feature differences between the 32R and the 32S. Okay, we'll get on that in 2 minutes. Yeah, sure. All right. So we're now going to connect to DL32R. Okay. So once I connect it, you would see
Hang on a minute. It will ask where I want to synchronize the show from, all right, which I had. Instead of a green icon of the mixer, I now see a green radar. Yeah. Okay, so that tells me that I'm connected. तो जहाँ पे आप आइकन ग्रीन के बदले में आगे ग्रीन रेडार भी देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका डिवाइस कनेक्टेड है. Right. So now I'm connected to a DL32R. Okay, the difference between a DL32R and a DL32S. First would be outputs, right? Physical outputs. If you were to look at the two devices, I'm going to switch over now back to DL32S. I've got 10 down here, right? Yeah. Okay, so now I'm going to switch over to a DL32R. Look at the outputs. I've got 14 down here. So I've got extra 2 outputs. The mic pre is different too. No, so the mic pre's are the same. There are 32 Onyx Plus mic pre's. The other thing that's different is USB recording direct to hard drive, which is not available on the S. And Dante implementation is not available on the DL32S. जो जैसे ने बताया, जो मेन डिफरेंस है, एक तो आउटपुट्स में फ़र्क है. DL32S में 10 आउटपुट है ऑक्स, और 32R में 14 आउटपुट है. साथ ही साथ जो रिकॉर्डिंग में है, मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग और हार्ड डिस्क में आप लगाने के आप सिर्फ 32R में कर सकते हैं, जो कि 32S में नहीं है. और जो उनका डांटे कंपैटिबिलिटी है वो सिर्फ 32R में आता है, 32S में नहीं आता है. And all that's hardware differences. On software differences, on software front, it would be matrix. There is no matrix for the DL32S. और मैट्रिक्स भी DL32S में मैट्रिक्स का ऑप्शन नहीं है. I think obviously the ability of being able to work with the DC16 control surface, only the DL32R can be tied up with the DC16. जो DC16 का कंट्रोल सर्विस है, उसके साथ आप सिर्फ DL32R लगा सकते हैं. Is that good? Yeah, it's all good. Cool. All right. So before I go on, I want to highlight something. I'm not going to be able to show you panning, all right, because Zoom somehow sums my 2 input to become mono, so I can't pan. Whenever I pan something, you're just going to hear level dropping. Jason, I want to ask you, the DL32S can do multi-track recording, right? Yes, you can direct to a computer. Or direct to a computer, but you can't do direct to a hard drive. No, you can't. Okay, so DL32S में आप multi-track recording कर सकते हैं, but सिर्फ डायरेक्ट कंप्यूटर पे लगा के आप हार्ड ड्राइव पे नहीं लगा सकते. तो जैसे ने कहा कि जूम के ऑडियो डिलीवरी के कॉन्फ़िगरेशन में ये सारा ऑडियो को सम करके एक मोनो स्ट्रीम देता है. इसकी वजह से आपको जब पैन करेंगे तो आपको सिर्फ लेवल में फ़र्क नज़र आएगा. आपको एक्चुअल पैनिंग समझ में नहीं आएगा क्योंकि जूम का ट्रांसमिशन मोनो है. So if you were to see me panning like this and like this, you're going to hear the levels just dropping. अगर आप सिर्फ पैन करेंगे लेफ्ट राइट तो सिर्फ लेवल ड्रॉप होगा. Okay. Obviously, before I talk about mixes and the settings and stuff like that, warning. Okay. Every time when you do a mic presetup or levels, always bring your headphone levels to as low as possible. The last thing you want to do is hurt your own ear. All right. तो जब भी आप हेडफोन यूज करेंगे लेवल को ध्यान रखते हुए कम करना, क्योंकि अगर जोर से कुछ आवाज आया आपके कानों को डैमेज होगा. All you need to do is look at the meter and hear the sound faintly. Usually it's good.
Yeah. Okay, so now I'm going to talk about the meters. All right, so on the mixer itself, you're going to see thumbnails. Now I'm on the mix view, right? So these are thumbnails. Just want to let you understand what I'm talking about when I say thumbnails. Every single small, tiny little portion of this, I consider them as thumbnails. ये जो छोटा आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे इधर एक चैनल पे येलो में मार्क किया है, वो सारे आपके थंबनेल्स है. Okay. Whenever you see me touching a control, okay, moving control whatsoever, you're going to see an indication. You're going to see the buttons glowing. That indicates I am touching that button and I'm controlling that levels. जब भी आप स्क्रीन पे कुछ ग्लो देखते हैं, मतलब ये इनको ये बटन को या इसको कंट्रोल कर रहे हैं. Right. So, hang on a minute. Okay, so if I were to touch the pen, you see that it's glowing. If I were to touch a fader, you see that's glowing. All right. So that's a very easy way to follow me. Okay. तो जब भी आप देख सकते हैं पैन के बटन को अगर वो लगा रहे हैं तो ग्लो होगा, अगर ये फीडर के बटन को लगा रहे हैं वो ग्लो होगा. तो बहुत आसान होगा आपको फॉलो करने के लिए कि वो क्या मॉडिफाई कर रहे हैं. Okay, so let's fly now. Okay, so this is the channel strip. On top of that, this one would be your input routing thumbnail. जो चैनल स्ट्रिप के ऊपर आप देख सकते हैं ये आपका इनपुट राउटिंग का थंबनेल है. You can see a slight difference between these two channels. Okay, on my mic pre channel, you can see a 48 volt here, meaning that 48 volt is turned on this channel. The gain is pushed up, whereas this one is down and 48 volt is off. This one is on B routing. This one's on A routing. The trim is where it's supposed to be at 0. The two, okay, I'll pass that to you, Karen. आप देख सकते हैं दोनों में फ़र्क. जो माइक इनपुट है वहाँ पे एक 48 वोल्ट का फैंटम पावर चालू है. उसका जो लेवल है, द रेड वन इज द लेवल, राइट? Yep, this is the level, right? So this is turned on, this is turned off, this is turned off, this is turned on, right? तो ये माइक का वो चालू है और जो राउटिंग है उन्होंने ए जो चैनल 29 है वो ए पे राउटिंग किया गया है और माइक जो है वो बी पे राउटिंग किया गया है. Yep. So we spoke about you being able to quickly switch between routings. All right, you can pre-plan routings and stuff like that, which we will dive in later. Next would be your EQ thumbnails. उसके बाद हमारा EQ का थंबनेल है. All right, the EQ thumbnails are very interesting. It shows you the EQ settings and stuff like that. From here, I can see that the EQ is turned on because there's a white line over it. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो थंबनेल है वो EQ सेटिंग्स का है आपके चैनल का. EQ सेटिंग यहाँ पे चालू है क्योंकि आप देख सकते हैं वाइट लाइन दिख रहा है उसके ऊपर. Okay, I'm going to use channel 29 to show you how it is being affected. I don't want to affect my own microphones, so I'm going to click on the EQ section. तो जो चैनल 29 पे करेंगे क्योंकि उनको अपने माइक पे नहीं करना है. Look at the thumbnail now. The thumbnail is on the far left of the screen. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थंबनेल एकदम लेफ्ट साइड में है. मैं इसको अगर बहुत जल्द मार्क करूँ तो यहाँ पे थंबनेल यहाँ लेफ्ट साइड पे आ गया. Thank you, Karen. That looks beautiful. Okay, so now I'm going to turn off the EQ. You're going to see the white line disappear. तो अब EQ बंद करेंगे, आप देखेंगे वाइट लाइन पूरा चले गया अगर आपने EQ बंद किया तो. All right, so that's an indication whether the EQ is turned on and off. From far, you can tell that what state is on. तो आप दूर से बता सकते हैं कि ये EQ चालू है या बंद है. All right, the next one would be your high pass filter. All right. उसके बाद है हमारा हाई पास फिल्टर. So if I were to push the high pass filter to maybe choose a frequency, Karen. Maybe 100 hertz or 150. 100 hertz. It will be.
All right. So now it's on the 100 hertz high pass, which is great for microphones. It prevents all your popping and everything. You can see that it's turned on, and now you can see it's a high pass going on with the EQ instead of just a straight black white line. तो आप देख सकते हैं यहाँ हाई पास सेट करने के बाद हम इसको 100 हर्ट्ज पे रखा है, तो उसका जो 100 हर्ट्ज पे उसका लेवल अटेन्यूएट हुआ है और वहाँ उसके ऊपर ही आपको सिग्नल लेवल मिलेगा, उसके नीचे सब अटेन्यूएशन मिलेगा. So if I were to turn off the high pass now, look at what happened to the slope on the thumbnail. तो अगर उन्होंने बंद किया तो आप देख सकते हैं थंबनेल, जो उसके थंबनेल पे स्लोप देख सकते हैं, क्या हुआ है उसके ऊपर आप देख सकते हैं. You still see that there's a high pass frequency selected, but you know that the high pass is not turned on. आप देख सकते हैं कि हाई पास सिलेक्टेड है पर हाई पास चालू नहीं है. कैन यू जस्ट स्विच इट ऑन अगेन टू जस्ट शो व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली Here एंड you द go. कलर. या अगर एक्चुअली चालू है तो आप देख सकते हैं कलर में क्या फर्क है. Right, so from far you can tell whether the EQ is on or off, right? Whether the high pass on, whether the EQ is on, right? So now I'm gonna manipulate the EQ, all right? I'm gonna go channel 2, frequency 2 and frequency 3. You see that it's gonna be shown on the thumbnail too. तो जो भी आप EQ ऐड करेंगे आपके थंबनेल पे भी दिखेगा आपको डायरेक्टली. Right, I'm gonna make band 2 narrower. Let's see. It's reflected in real time. तो जैसे ही आप उसको EQ को चौड़ा या एकदम नैरो करेंगे वो आपको इमीडिएट रियल टाइम में दिखेगा Okay, cool. थंबनेल पे भी. So now I'm just gonna reset the EQ, right? So I've just reset it, turn off the high pass, and so from there you can tell if there's any EQ that's being turned on all the channels. If I were to scroll quickly, I can see all the EQs are all turned on, but none of them are active. आप देख सकते हैं अगर स्क्रॉल करेंगे सारे EQ चालू है पर कोई भी हमने कुछ सेटिंग डाला नहीं है तो कोई भी एक्टिव नहीं है. Right, so a lot of people were worried at first, like, oh, how do you see the EQs and stuff like that? It's very clear. It's very easy to see what state the EQ is on. आप बहुत लोगों को ये घबराहट होती है कि हमने अंदर EQ क्या यूज़ किया है, तो आप देख सकते हैं थंबनेल को ये देख के अब हमें मालूम पड़ेगा कि क्या EQ हमने यूज़ किया है. Okay, now right below the EQ thumbnail, it's the dynamic thumbnails. EQ थंबनेल के नीचे हमारा ये डायनामिक थंबनेल है यहाँ उसके नीचे. Okay, the dynamic thumbnails down here. Yeah, I know. Just done wrong. Nice one. Okay, the dynamic thumbnail shows any audio signal reduction that's going on. डायनामिक थंबनेल पे आपका अगर ऑडियो सिग्नल का कुछ रिडक्शन हो रहा है वहाँ पे आपको दिखेगा. So on the first red line is my gate. जो आपका पहला लाइन है वो आपका गेट है. Every time I speak, the gate will open. When I stop speaking, the gate will close. जब भी वो बात कर रहे हैं तो गेट खुलेगा, जब भी बात नहीं कर रहे हैं गेट बंद होगा. So every time I speak, you will see the bottom one going moving around. That is our compressor. So you can see my voice is being compressed, and it makes me sounding a bit better than I am actually is. तो उसके नीचे जो है गेट के नीचे आपका कंप्रेसर है. आप देख सकते हैं जब जेसन बात कर रहा था तो नीचे वाला इधर यहाँ कंप्रेसर थोड़ा हल्का सा चल रहा था. ये उसके आवाज़ को थोड़ा एक और बेहतरीन बनाता है. So I'm gonna do some compression on my voice. All I need to do is just hit this button, right? And I am already on my gate and compressor menu. जब भी उसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो वो खोल के आपका गेट और कंप्रेसर दिखाएगा आपको. Right, so it's very quick and fast. All you need to do whenever you want to go to an EQ, I just need to tap on the thumbnail
I want to go to the EQ of channel 28. I'll go to 28, tap on the thumbnail. I'm on channel 28 EQ. If I want to go to channel 29 compressors and gate, all I need to do is tap on the thumbnail of channel 29, right? So that's quick navigation. तो जब भी आपको कोई पे भी जाना है वही चैनल के थंबनेल पे आप सिलेक्ट करेंगे तो उसका मेन्यू खोल के आपको वो सारे फीचर्स कंट्रोल करने को देगा. Right, you don't need to go on a different page or a different layer just to get to the EQ, right? आपको अलग-अलग पेज या अलग-अलग लेयर पे नहीं जाना है सिर्फ EQ की तरफ जाने के लिए. Next one would be your pan, would be the pan. उसके नीचे जो है आपका पैन कंट्रोल है. So I do not need to talk about panning. Okay, as we all know, all these channels are in individual mono channels. They can be paired into stereo channels. ये सब इंडिविजुअल मोनो चैनल है, इसको पैच करके स्टीरियो चैनल भी बना सकते हैं. Right, so if I go there, link, right, so you see channel 27 and channel 28 being linked. Yes. All right, from the mono channel, suddenly I see now two VUs on one single fader. तो आप देख सकते हैं अभी जो पहले सिर्फ सिंगल चैनल था, अभी 27 28 एक साथ है जिन्होंने लिंक किया है और अभी आपको दो VU मीटर दिख रहे हैं. आपके दोनों मीटर इनपुट को पैच करके स्टीरियो बनाया है. All right, so all mono channels can be paired with the next channel to become a stereo pair. सब मोनो चैनल उसके बाजू वाले चैनल को पेयर करके उसको स्टीरियो चैनल बना सकते हैं. Okay, mute whenever it's red is mute, whenever it's gray is unmute. जब भी ग्रे है अनम्यूट है, अगर रेड है तो मतलब म्यूट. Right, so we spoke about the faders before. When it glows, it moves. It's the one that's being controlled. Okay, this fader has got a treble of you can see minus 120 all the way to plus 10 dB. So it's altogether 130 dB of 130 dB of treble. आप देख सकते हैं नीचे माइनस 120 dB से लेके प्लस 10 dB तक जा सकता है, तो ऑलमोस्ट 130 dB का ट्रैवल है फीडर का. Okay, so it can be very fine if you want to. Let's say if I want to get to minus 7.5, right? I can do that really, really finely, right? Instead of just controlling the fader, there's another way of inputting values to the faders. Yeah, you want to show that or you want to talk? I'm going to show that to them after you explain. तो फीडर एकदम ऊपर से नीचे आप बहुत एक्यूरेटली आप लेवल पे जा सकते हैं. वो लेवल को छोड़ के अगर आपको डायरेक्ट एक लेवल पे एंटर करना है वो भी आप कर सकते हैं. As you can see, whenever I touch something, this screen shows the value of the parameters that I'm on, right? So I can actually double tap this and go 7.5, right? And it hits to 7.5. तो आप देख सकते हैं कि जब भी जेसन कोई फीडर को कंट्रोल कुछ कर रहा है तो वो जो भी लेवल है वो आपके डिस्प्ले पैरामीटर पे आ रहा है. तो जब भी उसको आप डबल क्लिक करके डायरेक्ट अपना लेवल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और डबल क्लिक करके अपना लेवल आप एंटर करके वही लेवल पे आएगा. So if I were to go minus 15.5, I can do that too, right? So you can be very, very precise with this app if you want to. तो इसके लिए आप बहुत ही एकदम एक्यूरेट जा सकते हैं. कोई भी लेवल आपको सेट करना है उसको सिलेक्ट करके आप डायरेक्ट एंटर कर सकते हो उसको. This way of editing is not just for faders, it's for every single parameters on the mixer itself. So we can get down to whatever you want to do to be super refined. तो ये सिर्फ लेवल के लिए नहीं है, सब पैरामीटर को आप अलग से मैन्युअली एंटर कर सकते हैं, तो आप बहुत एक्यूरेट एंट्री कर सकते हैं अपने पैरामीटर्स का. Right, great. So I'm going to show you more later. Don't worry about it. As you can see, I just clicked on the pen. It shows me I'm on center. If I were to move to the left, it's 100 right.
100 left, right? Double click it, center. It shows the value of whatever parameters you are on. Okay. Okay. So next one would be mute. All right. I would like to talk about solo. Sorry, solo. I've got two modes. All right. Solo. I've got PFL and AFL. तो जो सोलो मोड है आपके दो मोड है PFL या AFL PFL जैसे आप सब जानते हो प्री फेडर लेवल है. Yep. So that is selected under 2. तो आप देख सकते हैं कि प्री फेडर लेवल यहाँ सिलेक्टेड है. All right. So at this point it's set to auto. यहाँ पे अभी हमने उसको ऑटो सेट किया है. Okay. So let's move on a bit. Okay. Have you noticed the numbers on the side of the VU meter? जो व्यू मीटर के साइड पे आप देख सकते हैं कुछ नंबर है. This indicates which subgroups it's on, which view groups it's on, which mute group it's on. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा सब ग्रुप चालू है, कौन सा म्यूट ग्रुप चालू है, कौन सा व्यू ग्रुप चालू है. विच इज द लास्ट वन? View groups, mute groups, and subgroups. तो आपका व्यू ग्रुप, म्यूट ग्रुप और सब ग्रुप यहाँ पे आपको सारे लेफ्ट में आपको दिखेंगे. Okay, just have a look. I'm gonna quickly assign subgroup 1, mute group 1, view group 1. All right. तो आप देख सकते हैं हमने इसको असाइन किया है सब ग्रुप 1, म्यूट ग्रुप 1 और व्यू ग्रुप 1. Sorry, VCA, mute groups, not view groups. VCA, subgroups and mute groups. यहाँ पे Look लेफ्ट at में here. आपको सब ग्रुप, VCA और म्यूट ग्रुप दिख रहे हैं. When I hit subgroup, you're gonna see a blue light here, blue LED. देख सकते हैं जैसे हमने सब ग्रुप सिलेक्ट किया यहाँ पे एक ब्लू लाइट दिख रहा है आपको. VCA. All right, and then the next one will be mute groups. This indicates which group it's on for subs and VCA information. तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल आपको नज़र आएगा कि कौन सा आपने सब ग्रुप सिलेक्ट किया है. ऑलराइट, सॉरी. Okay, I can switch it over. Hang on a second. Okay. तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपने कौन सा सब ग्रुप सिलेक्ट किया है, कौन सा VCA सिलेक्ट किया है, यहाँ पे आपको नज़र आएगा. और कौन सा आपका म्यूट ग्रुप है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया. अगर आपने चालू किया तो अपने आप यहाँ ग्लो होगा और बंद किया तो वो डिसेबल हो जाएगा. So if I were to switch it to a different view group, mute group, as you can see, the indicator has changed to a different number. तो हमने ग्रुप चेंज किया तो यहाँ इंडिकेटर का नंबर चेंज हो गया. All right. So this is one way of you assigning your routings, your output sections and stuff like that. Okay. यहाँ पे आप अपना आउटपुट सेक्शन सारा असाइन कर सकते हैं. Okay. So that's one way of doing it, but there's more than this way of doing it. Okay. Before I go there, next one would be your channel strip. At the bottom, you see the name, right? So this tells you which channel you are on. This is channel 29. This is channel 30. This can be changed to a name of whatever you want it to be. तो यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं हमारा चैनल नंबर है और यहाँ लिखा है चैनल 29. ये नाम आप चेंज करके जो भी आपको चाहिए वो चैनल आप नाम डाल सकते हैं. If I click on the number itself, a news menu will appear. तो अगर हमने उसको सिलेक्ट किया एक अलग से एक मेन्यू खुलेगा. So it allows me to put in a name of anything that I wish it to be. तो अब जो भी नाम डालना है वो वहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं. Right, I'm gonna call this cat just because I like cats. Right, so I've got cat sound there now. तो मैंने बिल्ली का नाम डाला है यहाँ पे. Okay, or I can change it back to default name by clicking here. यहाँ तो डिफ़ॉल्ट नाम सिलेक्ट करके एकदम सिलेक्ट करके अपने आप चैनल 29 वापस आ जाएगा.
instead of just names on top of names, let's put a guitar on this. On top of just having names, I can put image, right? When I click on image, screen will, another menu will appear, camera, image from disk, icon, show image, and clear image. यहाँ पे आप इमेज भी डाल सकते हैं, जहाँ पे आप कैमरा यूज कर सकते हैं, एक डिस्क से अपना इमेज डाल सकते हैं, एक आइकन या और इमेजेस दिखाना है या इमेज क्लियर करना है. So I can use icons if I want to. Yeah. Right. Or if I want to use the camera to take a photograph of me and use that as the icon. Yeah, I can do that too, right? I can do that. Take a photo, proceed, and you should see an old photograph of me. Let me clear that. Okay, clear image. Horrible. And obviously you can import image from disk, right? So I can actually take a photograph of myself and add it there. So this is really easy and great for naming your channels. You can remember a face, you can identify a face, you can forget a name. You know what I mean? You can be introduced to 10 people on stage, but sometimes you forget the name. But with a face on the channel strip, you will know that channel belongs to who. तो जेसन बोल रहे हैं कि आप अपना इमेज डाल सकते हैं और बहुत बार आपको नाम आप भूल जाते हो, बट अगर आपका चेहरा याद है, आप उसका आदमी का आप फोटो डाल सकते हो, तो आपको चेहरा याद रखने में बहुत आसानी होगी. Right. So next to that would be color. Obviously, you can identify the type of instruments by color. Let's say you have drums and you want all your drums to be on a red channel strip. You can do that too. तो आपको सारे ड्रम्स एक लाल कलर के चैनल पे डालना है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं. Right, so that makes it very quick and easy to identify a channel. All right. How about a faster way of doing things? I can do a quick assign. Let's see how we can do quick assign. I'm just gonna move all the way to channel 1. All right, and I'm gonna do quick assign. As you can see, there are already pre-named buttons that I can use. तो आप क्विक असाइन पे सिलेक्ट करेंगे तो आप पूरा एक लिस्ट खुलेगा जहाँ पे बहुत सारे लगभग जो कॉमनली यूज होते हैं नाम, वो इमीडिएट खुल जाते हैं और आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. All I need to do is, when I have this screen up, I need to do is just click on the icon or the name, drag it to the channel. आपको सिर्फ वो नाम ये मेन्यू खोल के ड्रैग करके कौन सा चैनल है उसके ऊपर डालना है. Right, so I've very quickly just done a couple of channels, right? And on top of that, I want icons in there. Kick and a snare and overhead, right? So I can quickly assign colors, icons, names. I don't have to type in. Sometimes typing in can be too slow. I can change it up later. Yeah. All right. So next one would be presets. Okay. This is where all the presets are. So if your channel is a kick drum and I quickly want to kind of get somewhere near a kick drum character, how the EQ should be or how the compressor should be set, I can just click on that and you can see the EQ is being turned on, the compressor is being set, and the gate is being set. Okay. तो लगभग आपका अलग अलग प्रीसेट्स है इंस्ट्रूमेंट का, कौन सा इंस्ट्रूमेंट टाइप है आप सिलेक्ट करके उसके जो लगभग ऑलमोस्ट जो डिफ़ॉल्ट या एक तरीके से कॉमन पैरामीटर्स सेट होते हैं, वो उसका लगभग EQ और सेटिंग्स लोड हो जाएंगे. Okay, cool. So you have already learned how to quickly assign and link and everything on the mixer. So you basically now know how to
maneuver on the mixer itself. You can identify what's going on the thumbnails, and you're already 25% into the mix of knowing how to use the mixer. तो आपका ऑलमोस्ट 25 से 30% आपको ऑलरेडी सारे मिक्सर का फीचर्स आपको ऑलरेडी आ गया कि कैसे यूज करना है. Okay, so it's very simple. Now I'm just gonna go through all the things on this channel itself. I've got channel 1, 2, 32 on the DL32R. I'm gonna scroll. You're gonna see it hitting channel 32, right? तो यहाँ पे आप ये हमारे पास 32 इनपुट है, तो स्क्रॉल करेंगे तो हम लोग को ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं इनपुट 31 32 तक आपको ये सारे इनपुट दिख रहे हैं. I've got two return channels. This can be assigned to USB 1, 2, 3, and 4. ये आपके रिटर्न चैनल है, आप इसको USB को असाइन कर सकते हैं. These are my effects return channels. ये आपके इफेक्ट्स के रिटर्न चैनल हैं. My 6 subgroups. ये सारे 6 सब ग्रुप है. And my 6 VCAs. आपके 6 VCA है साथ में. All right. I'm not going to talk about what VCAs are at this point. Let's talk about fader selector strip then. Okay. So we've known how to do this, how to work on this, and we're going to talk about fader selector script. Okay. So let's talk about mute groups, view groups and stuff. Maybe the reason why I'm doing that is because maybe I don't want to do all this scrolling. तो फेडर सेलेक्टर स्ट्रिप के बारे में बात करेंगे जहाँ क्योंकि हमें ऐसे सारे चैनल एक साथ स्क्रॉल करना नहीं है. Okay, so now I'm gonna talk about view groups, right? So view groups allows me to shrink down the numbers of channels I see. I've got up to 6 that I can use. तो आपके व्यू ग्रुप्स आप 6 व्यू ग्रुप्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं. All right. This 6 subgroups, view groups, will show the selected assigned channels I have assigned them to. तो जो आपने चैनल इसको ग्रुप को असाइन किया है आपको दिखेंगे. Okay. Before I go on that, I can see a all, which shows everything, and then I see an auto. तो एक ऑल है जिसमें सारे आपके चैनल दिखेंगे और दूसरे उसके बाद है ऑटो. All right. If I were to click on auto, what happened is I can see only 2 channels and then my VCAs. Why is that so? अगर हमने ऑटो सिलेक्ट किया तो हमें सिर्फ VCA और 2 चैनल दिख रहे हैं. क्यों है ऐसा? Okay. If I were to look at the guitar channel, it's at 100 and minus 112, and obviously the rest are all on 0. It means any fader that has more than infinity, right, that's turned on, will automatically be shown on this particular window. तो इसका आप देख सकते हैं गिटार है एकदम नीचे और माइक है लगभग बीच की तरफ. तो इसका मतलब ये है कि जो भी जिसका भी लेवल माइनस इन्फिनिटी के ऊपर है उसका वो आपके ऑटो के व्यू ग्रुप पे आएगा. So let's move back to all. I'm going to turn on my drums. Okay. I'm going to turn up my drums, not turn on. And I'm going to turn up channel 6. I'm going to move down. I'm going to turn down maybe the guitar. Okay. I leave my mic on. Obviously you want to hear me. Now switch it over to auto quickly. I see the channels that are activated. तो आप देख सकते हैं हमने कुछ लेवल बढ़ाया गिटार इस ड्रम्स का लेवल बढ़ाया. तो जैसे हमने लेवल बढ़ाया तो ऑटो के व्यू ग्रुप पे ये लोग ऑलरेडी असाइन हो गया ऑटोमेटिकली. So it automatically assigns whichever active channels are being used. तो ऑटोमेटिकली कौन से चैनल यूज करें वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाते हैं. Okay, so we've spoken about how to assign the view groups earlier on. Let's do a quick view. The first one, I have 3. This is maybe my drums. All right. And then view group B, or maybe channel 4 or 5. All right. This is view 2. Okay. So I'm going to close that.
If I were to hit drums, I'm going to see the drums. If I were to see view 2, I'm going to see view 2, the channels I've selected. तो आप देख सकते हैं जो हमने ड्रम्स में माइक सेलेक्ट किए वही दिख रहे हैं हमको ड्रम्स के व्यू ग्रुप पे, और व्यू 2 में जो हमने माइक सेलेक्ट किए वही दिख रहे हैं हमें जो चैनल 4, 5, 16 और 17 है. So I've got up to 6 of them that I can assign, right? So very quickly I can just move around the whole entire mixer without having to keep scrolling at all, right? तो आप बहुत जल्द पूरे मिक्सर को देख सकते हैं बगैर स्क्रॉलिंग किए सिर्फ व्यू ग्रुप अच्छी तरह असाइन करने के बाद. Okay, so you've got that, you've got the mute groups. I think you understand what it is for by now, but regardless, I'm going to show you, okay? Let's say I'm going to move on to another demo. Okay, I'm going to move on to 2, right? Okay, let's have 1, 2, 3, 4, 5 as a drum set. I'm going to name them. Nitish, can you just quickly translate for Jason? I'm just using the washroom. Sure. Nitish, is Nitish around? Let me. He's on mute, so. Yes, yes. Just this thing, I'll just be back in Sure. a couple of minutes. Take your time. Yeah. Jason, you can proceed. Nitish will help with the translation. Sure. I'm just going to assign channel 1 to 5 as my drum set. This is a very, very small drum set. Okay. I've got a kick snare, or rack tom, and 2 overheads. Okay. Next to that, I'm going to have a bass guitar. And I'm going to have a acoustic guitar. Okay. And vocalist. And backing vocals. Okay, so let's pretend this is the band. Okay, so I've got a drum, a drum set. I've got a bassist. I've got an acoustic guitar. I've got a vocalist, and the 3 of them actually sings during the whole entire performance. So the drummer and the bassist would act as the backup singers, right? So I'm going to now assign mute groups and view groups to all these 3 musicians. So on the first view group, I want the drummer and backing vocal number 9. Okay, so I'm gonna go drummer, assign kick snare, tom, overheads, backing vocal. All right, so that's him. All right, and maybe the next one will be the bassist itself. I'm gonna assign to V, bassist and backing vocal. All right. The following one would be on C, which is can change this. Acoustic guitar and the main vocal. So view group A is my drummer. View group B is my bassist, right? View group D is my acoustic guitar. You want to take over? I somehow can't hear you. Yep. Oh, can you hear me? Yeah, You sorry. are go. Yeah. Cool. तो हमने अलग अलग चैनल्स का नेमिंग कर दिया और फिर ये अलग अलग ग्रुप्स हमने अलग से व्यू ग्रुप बना दिया, क्योंकि अगर हमने समझो ज़्यादा चैनल्स है 24 या 32 चैनल है तो उसको
स्क्रॉल करने के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, तो उससे बेटर अपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, समझो सारे ड्रम किट या सारे परकशन, या इन्होंने क्या किया कि ये व्यू ग्रुप ए में सारे ड्रम्स का चैनल्स लगा हुआ है, वो किक, स्नैर, टॉम, ओवरहेड्स और ड्रमर का बैकिंग वोकल। और फिर आपका व्यू ग्रुप बी में बेस गिटार और उसका बैकिंग वोकल, और व्यू ग्रुप्स डी में अकॉस्टिक गिटार और मेन वोकल, ऐसे ग्रुप्स बना दिया। तो Yep. जैसे So आपने वो पर्टिकुलर व्यू अगर आपने सेलेक्ट किया तो सिर्फ वही चैनल्स आपको दिखेगा। yeah, so very quickly from here, I can just switch between the different views that I need to go, right? Let's say this is the drum, and that's my bassist, and that's my acoustic guitar main vocalist, right? So, Yeah, you can go ahead, sir. okay, so next would be mute groups, right? So I'm going to do the same thing. I'm going to assign mute group 1 to be my drums, right? Go drummer. Mute group B to be my bassist, right? Put T behind. And then this would be, sorry, mute group 4 would be my lead singer, right? So let's close that. So I can have all the channels up now, right? And if I have a song that the drummer is not playing, right, and I need to turn off all his microphone, I can do so very quickly by going here, hit that. Even though they're far apart, I can turn them off very easily from here. Right. Yes, तो बेसिकली वो सेम चीज जैसे आपने ग्रुप्स व्यू ग्रुप आपने सेलेक्ट किया, वो सेम तरीके आपने म्यूट ग्रुप भी सेलेक्ट कर सकते। तो ये ऊपर जो मैंने रेड कलर जो हाईलाइट किया, आप वहाँ पे सारे म्यूट ग्रुप्स है, आप उसमें क्लिक कीजिए और जो भी चैनल्स असाइन करना है वहाँ से असाइन कर सकते हैं। और फिर जब भी शो के टाइम में अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट ग्रुप या म्यूट करना है तो यहाँ से आपको म्यूट कर सकते हैं। Okay, so I think you'll get inkling of how this software, this app work, right? So the next one I'm going to show you would be the mixes, all right? This is all your mix output down here. These are all your mix outputs, sorry, pardon my grammar. So I've got left, right, my 14 aux outputs, my effects send, and my subgroups and my VCAs and matrix. तो यहाँ पे आप नीचे आपको अलग अलग मिक्स या आउटपुट्स का ऑप्शन है, उसमें आपका LR है, ऑक्सेस है, इफेक्ट्स है या सब ग्रुप्स या VCA का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। Nice. If you hit this will be your mix section. This will be all your individual mixes, right? Aux 10 now, main left, right. I can go to my effects. So you select your mix down here. I'm not gonna talk too much about this, but I think most of you would understand what this is all about. तो बेसिकली वो अगर आप वो नीचे जिसमें मैंने रेड कलर को हाईलाइट किया, आप वहाँ से अलग अलग ऑक्स का सेंड या इफेक्ट्स का सेंड या VCA का लेवल्स आपको उधर से आपको एडजस्ट कर सकते हैं। All right. Now we're gonna have some audio now. Okay, just pretend I have already set up a chain of instruments, right? This is going to be my show for today. I've got a jazz band playing. We've got a drummer. I've got keyboardist. I've got a bassist. I've got acoustic guitar. I've got electric guitar. I've got a distorted electric guitar. I've got a trumpeter. Okay. I'm just gonna play a short instance of the
the track. As you can see, the right symbol is playing now. We're just gonna play through the tracks, and I'm gonna. First thing first, I want to lower all the instruments, right? They're all set to VCAs. Okay, very quickly, I've just lowered the whole entire drums, bass, every single instrument in the band using VCAs. I'm going to talk about that later. So before I go on deep about this, I'm going to show you the overview, all right? The overview shows me what's going on at the moment. I'm on the main left right now. अभी हम overview पेज पे है एंड उसमें आपको सारे फेडर्स और सारे लेवल्स आपको दिख रहा है. I've got my kick, my snare, everything down here. If I need to mute something, let's say I want to mute the snare, right? Obviously, you're going to hear some snare from the. तो वो ओवरव्यू पेज में आपको फेडर भी चेंज ऊपर नीचे कर सकते हैं और म्यूट भी कर सकते हैं. ऊपर सेक्शन आपका सारे आउटपुट्स है और नीचे सेक्शन आपका इनपुट्स है. So imagine if you have already assigned a mix, you are running the show. All you need to do is get here, and if somebody were to say, "Hey, aux 2, I need to have my keyboard," all I need to do is aux 2, bring up my keyboard, all right, and bring up the level. Now I've already sent the 2 Hammonds to aux 2. हाँ, तो जैसे अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट ये जो मैंने ब्लू कलर हाईलाइट किया वो आपका मेन मिक्स है. और अगर आपने कुछ ऑक्स लेवल्स आपको बदलने का है तो ये ओवरव्यू पेज पे आप वही ऑक्स सेलेक्ट करके और फिर वो ऑटोमेटिकली send to faders या ऐसे you can call it that. Yep. It selects the sends to that particular aux. Yep. So I do not need to move around too much. All I need to do is stay on this page most of the time. If I need to send, if somebody will say, "Hey, aux 4 monitor, I need to have my microphone into aux 4." Push up aux 4. There's nothing going there now. All I need to do is hit on this tab down here, and I go microphone app. That's my microphone being sent onto aux 4 output. It's very simple, very quick, very fast, very efficient. बेसिकली शो के टाइम में आप यही पेज पे रहना है और इसमें आपको सारे लेवल्स सेंड कर सकते हैं. यू कैन कंट्रोल द मेन मिक्स, आपका इंडिविजुअल ऑक्स का मिक्स और सारी चीज़ आप वही पेज पे आपको कंट्रोल कर सकते हैं. Yep. So I just wanted to show how quick and how fast I can move around on overview. I like the overview the most. I spend the most time on the overview page. Whenever I'm done with a mix, I've done my setup, I've done my routing, this is where I will be. तो बेसिकली शो के टाइम में जब भी आप साउंड चेक के बाद आपका पूरा प्रोसेसिंग सेट हो गया, आपका EQ कंप्रेसर वगैरह सेट हो गया, तो शो के टाइम में आप सिर्फ ओवरव्यू पेज पे रहना है एंड वहाँ पे आपको सारे लेवल्स चेंज कर सकते हैं
और ये काफ़ी इजी सिस्टम है क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा मेन्यूज नहीं है, आपको अलग अलग पेज जाने का ज़रूरत नहीं है, आप एक ही ओवरव्यू पेज को सारे कंट्रोल्स है. So, Okay, so we've spoken about that. Now I'm just gonna go. We've spoken about overview. We've spoken about mixer view. Let's talk about channel view, right? तो अभी So हम चैनल व्यू पे देखेंगे क्या क्या है उसमें. on channel view, you can see the inputs and the outputs assignment. तो यहाँ पे चैनल व्यू आपको इनपुट और आउटपुट असाइनमेंट दिखाएगा. Okay, you can see mic pre-10 and USB 10 on सारे channel 10. चैनल्स को दो इनपुट उसमें दो इनपुट सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर आप चैनल ए अपना स्टेज बॉक्स का इनपुट है और उसका सोर्स भी आपका यूएसबी का इनपुट. अगर आप कुछ ट्रैक्स आप प्लेबैक करना है तब यूएसबी सेलेक्ट करना, नहीं तो अगर आप लाइव माइक कनेक्ट करना है तो वो स्टेज मिक्स का वो इनपुट सेलेक्ट कर सकते हैं. All right, so I've got two inputs down here. This can be changed. All right, I'll show you to you later. So this is the subgroups send, your VCA sends assignment, your mute groups assignment, your view groups assignment. This is your aux mix. If I were to bring up aux1, aux2, and aux3 on channel 10, if I were to go to aux1, you can see that being up, aux2, that being up, right? You can see that. So you don't need to be on the mix page most of the time. You can be on the channel strip and do your mix on the channel strip if you want to, or you can do your mix on the mix selector. तो आप यहाँ पे दो ऑप्शंस है. आप अगर आप ये जो मेन सेंटर में आपको जो फेडर्स दिख रहे हैं वो इंडिविजुअल चैनल का ऑक्स सेंस है, और अगर आप ये राइट हैंड साइड पे जो मिक्स सेलेक्टर है आपको वहाँ से अलग अलग ऑक्स सेलेक्ट करके और फेडर ऊपर नीचे कर सकते हैं. Okay, cool. Next will be my EQ. All right. If you were to look at the EQ, I've got a parametric EQ down here. A parametric EQ allows, I would say the parametric EQ is suitable for very fine surgical sculpting of frequencies of the audio source. तो यहाँ पे EQ पेज में आपका पैरामीट्रिक EQ है, और जिसमें आपको जो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी आपको सेलेक्ट करके और यू कैन इंक्रीज इट और डिक्रीज इट. Right. On top of that, we also have a vintage EQ. The vintage EQ is more for styling. If you want a very warm, very wide frequency change range, the vintage EQ is very would be that for that purpose. तो उसमें दो ऑप्शन है, एक नॉर्मल पैरामीट्रिक EQ है और दूसरा विंटेज करके एक EQ है जिसमें आपको थोड़ा वार्म और वाइड रेंज मिलेगा. वहाँ पे आपको सिर्फ ये ऐसे इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज सेलेक्ट करके वही फ्रीक्वेंसी आपको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. Yep, very simple. From a very simple EQ to a very surgical EQ, it's your choice which one you need to use. Yeah. All right. Next would be the gates and compressor. Same thing. You have two choice. तो उसका गेट और कंप्रेसर में भी ऐसे ही विंटेज ऑप्शन है, जिसमें आपको समझो एक एनालॉग लुक एंड फील है, तो उसमें खाली इसका ये through using these dials you can increase or decrease the threshold and other options in that. Yep. So hang on a second. All right. So basically now you know between the three different views. Now let's get to effects. Okay. So effects, at this point you see only two active effects going on, two reverbs. अभी सिर्फ दो इफेक्ट ऑन है, दो रिवर्ब है उसमें. I can turn on the other two to assign it for different things. All I need to do is click on effects 3,
maybe I want a delay on it, right? Maybe I want a tape echo delay. And the fourth to be maybe a chorus, which would be a modulation effects, a mono chorus. So I've got room reverb, I've got the longer reverb, the hall reverb, tape echo delay, and a chorus. This would probably be a very common setup for most live application. You would never need more than 2 reverbs on live application or that many delay, because you're gonna clutter your mix so much because of the room, right? You're not gonna hear anything. इस इफेक्ट्स पेज में आपको अपना 4 इफेक्ट्स इंजन है और आपको व्हेन यू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर इफेक्ट्स आपको आप अलग-अलग इफेक्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका प्रीसेट्स भी है और उसके सारे पैरामीटर्स आपको चेंज कर सकते हैं. Okay, so what I'm gonna try to do is put some effects on my voice, right? Might sound strange, but we'll do what we can. Okay, hang on a second. Effects 1. Where's my voice? My voice is on channel 30. 2, 1, 2. So I'm sending the reverb now to my voice. तभी उनका वॉइस में रिवर्ब डाला है. Okay, so that's effects 1. As you can see, the faders are going up now. Not faders, the VU is going up. It's receiving my voice. I'm gonna do some EQing on the reverb itself. तो सारे इफेक्ट्स में वो इफेक्ट्स का अलग से EQ है, तो आप अगर आप sorry. I'm gonna brighten the reverb to hey. I'm gonna tick down the high frequency and low frequency, so suddenly my voice become a bit nearer, as you can tell. Yeah. Okay, I'm gonna lessen the high frequency. So by manipulating the EQ is one way of adjusting the sound of your effects. Next thing would be the pre-delay. Pre-delay would be the first reflection. 2. Hey. 2. So as you can hear, the first reflection is 200 millisecond long now. Right? You can hear my voice going twice. प्री-डिले मतलब आपका पहला रिफ्लेक्शन का कितना टाइम गैप होने से फ्रॉम द ओरिजिनल सिग्नल. So that is your pre-delay. So I would always, hang on a minute, I would always go like pre-delay, think of it as walls, all right? The further away your wall is, your pre-delay stretches out, right? Because your reflection takes a longer time to come back to you from the wall to you, right? बेसिकली आप समझा कि प्री-डिले अगर आप रूम पे बैठेगा तो आपका दीवारों कितना दूर है आपका वॉइस से, तो वो रिफ्लेक्शन कितना टाइम लेते हैं वापस आने के. Okay. The decay would be how long that reflection stays in the room. So the more walls you have in the room, or should I say, if it's a square room, it's just going to reflect and it's going to stay in the room for a while. That decay would be it. So let's listen to it. I'm going to stretch it out. 2. Hey. 1. 1. 1. So very quickly I could manipulate the room again by using a decay. बेसिकली डीके है आपका रिवर्ब का कितना लंबा होना चाहिए, उसमें आपको सेट कर सकते हैं. On top of that, under that would be diffusion. All right, this is to how clear my voice is versus how blur my voice is, how much this reflection clutters together and make it audible or inaudible.
or distinguishable, should I say. Yeah. ये diffusion setting पे आपका voice का clarity increase कर सकते हैं. अगर आप diffusion बढ़ते जा रहे तो आपको थोड़ा और clarity मिलेगा उसमें. Right, great. So as you can hear, I mean, it's very simple and very quick to adjust the delay or whatever it is. And once you know the concept behind it, you can start thinking of designing different sort of rooms to match the purpose that you need. Just by using these 3 parameters. तो बेसिकली इस तीन पैरामीटर में प्री डिले, डिके और डिफ्यूजन से आपको अलग अलग रूम बना सकते हैं. जैसे अगर आप थोड़ा छोटा रूम का इफेक्ट बनाना है या बड़ा हॉल का इफेक्ट बनाना है तो आप ये इस 3 पैरामीटर में से बना सकते हैं. Okay, cool. So as you can see, it's really fun to do this. All right. Next would be, what's the most important for me would be routing. Okay. Once you do this, you probably go, hey, this mixer is simple to use. Okay. My mic pre is coming from, let me see. I'm coming in from channel 30, right? So if I want to send myself to channel 29 and channel 28, all I need to do is go here, channel 30 to 29 and 28. Okay, so let's see what happens. I don't see anything just yet. All I need to do is switch over to mic pre. Two. As you can see, I've got another fader up now. And yep, here you go. 2, 3, 4. I can easily just send anything from anywhere. Any channels to any inputs to any channel. बेसिकली इस पैचिंग के पेज में आपका लेफ्ट साइड का जो कॉलम्स है वो आपका स्टेज बॉक्स का इनपुट्स है और ऊपर का जो नंबर्स है वो आपका चैनल का नंबर है. तो आप कोई भी इनपुट आप कोई भी चैनल को ऐसे असाइन कर सकते हैं. और अगर आप चैनल डुप्लीकेट करना है तो वो सेम इनपुट आपको मल्टीपल चैनल्स में असाइन कर सकते हैं. Alright, the last thing I want to show you, you probably have seen it, an RTA. Every single EQ has got an RTA, but the output has got an RTA too. All right, so the RTA tells you the frequency that the inputs are coming in, your source. Okay, on top of the RTA, I've got a spectrometer. 2, 3, 4. Let's turn that on. This shows you not only the levels are shown in color, and this is time. Okay, so सारे चैनल, सॉरी, गो अहेड. Yeah, please go ahead. सारे इनपुट्स और आउटपुट्स में आपका इनबिल्ट आरटीए और स्पेक्ट्रोग्राम है. तो आप कोई अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है. इसी के अंदर आपको इंडिविजुअल माइक्स आपको आरटीए दिखा सकते हैं. तो आप अगर कुछ फीडबैक आएगा तो आप वही चैनल पे दिखेगा. और स्पेक्ट्रोग्राम भी है तो यू कैन सी मे बी आपका मतलब ज़्यादा टाइम में क्या चल रहा है. अगर आप ज़्यादा हाईज चल रहा है या ज़्यादा लोज चल रहा है आप यहाँ पे दिखेगा. Okay, cool. I think I've taken a lot of your time by now. As you can see, the master fader can do a lot that a professional mixer needs it to do. So if you have any question to lay over to us or to me, maybe you can get in touch with the guys from Sonotone or to Karan or to anybody. Maybe leave a comment and I'll try to get back to you more about the Master Fader app. And if you need more information about the Master Fader app, go to our website or use the app that you've downloaded. Go to the
go to the help page, right? Go to our YouTube channel. You probably might even see me in one or two of those videos that will run down the master fader and all the DL mixes. Basically, if anyone has any questions, you can type it in the Q&A section. Yep. So let's do a Q&A and then we'll go from there. और बेसिकली आप अगर आप ओवरव्यू देखेगा तो दिस मास्टर फेडर ऐप काफ़ी सारा ऑप्शंस है जिसमें नॉर्मली आप सिर्फ हार्डवेयर मिक्सर पे मिलेगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि आजकल अपना सिचुएशन की वजह से there will be lot of times where we cannot have the mixer like a proper big mixer inside the audience, or we can't have it or it will be like on the stage or behind the stage. So this is one of the few options, few brands where from the app itself you have complete control over all parameters, and it's just you just need a iPad or any kind of tab to control the entire mix on this. Yep. I see a question. Is there a question on? No, I'm no, just saying thank you. Thank you. Oh, okay. All right. Like I said, if you have any more questions or whatsoever, please forward it to anybody from Sonotone. I think they can help us on that. Or I bet Karen can answer every single one of the questions that you have to. It doesn't have to be directed to me, right? I know him well enough to say that. He's very capable. He scares me sometimes, right? The guys from Sonotone can help you very well and probably answer any question that you have for them. But if you have anything that you want to direct to me, maybe you can reach out to Karan. And he probably can forward the email to me, and Sure. I can help you in any way I could possibly do so. Before I sign off, I would like to thank everyone for joining us and taking your time and entertaining me for the long hours that I've stretched. I can go on for hours, I can go on for days. No, if I it's want to. really good and informative. I mean, it opens up, it informs us what all we can do. People just consider an iPad mixer something just like something too casual or something too easy just for small shows, or probably just like a 2-member band setups or something. But, when you get into such in-depth analysis, people realize there's so much more you can do with a DL32R or even something like a DL16S. Yeah, it's not just about what it can do, it's pretty much what you want it to do. If you want it to be simple, it can be very simple for you. You can assign it to have 1 or 2 faders, so your teachers or your students can use it. Or if you have a big show that you need all 32 channels, well, it's up to you. It's all done by you. We don't write a manual to teach you how to mix, because you should know how to mix. And mixing is fun. It can be something that you want to do or designed to do. Okay. All right. Back to you, Karen. Thank you, Jason. Thank you, Nitesh, and thank you, Louis, for waking up so early and joining us. It's I know it's really early out there in the US, and you guys supporting us means a lot. So if there's anything that comes up, anyone has any questions, please do email us. Enjoy the rest of the weekend, and that's all for now. So see you around next time. Okay. Thank you, Karen. Thank you. All right. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Bye-bye. Goodbye.